Jai Jingle. We'll begin with Manglacharan. अरहंत सिद्ध सुर उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तीन को स्वरूप जानी रागते भई जो भक्ति काय को नमाय स्तुति को उच्चारी है। धन्य धन्य तुम्ही से काज सब आज भये कर जोरी बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। So welcome to the inaugural session of this Los Angeles batch. आप सबका स्वागत है ये 2024 का लॉस एंजलिस बैच पे। स्वानुभूति जी थोड़ी देर में जुड़ेगी, तब तक अपन सबका इंट्रोडक्शन करते हैं। उसके बाद हमने जो अभी ये मंगलाचरण किया उसका हम अर्थ करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि स्वाध्याय से क्या लाभ है, और तब तक फिर स्वानुभूति जी जुड़ जाएगी तो फिर वो आगे लेंगे और नेक्स्ट क्लास से हम पढ़ाई शुरू करेंगे बाल बोध से। तो आज अपना इंट्रोडक्शन का ही रहेगा। इंट्रोडक्शन अपने को ऐसा करना है कि आपको पहले आपका नाम बताना है और सबको का इंट्रोडक्शन होने के बाद मैं अपना भी इंट्रोडक्शन दूंगा। तो एक तो है कि आप सबको अपने पहले नाम बताने हैं, फिर आप कौन सी सिटी से है। मोस्टली तो आप सब लॉस एंजलिस से ही है, लेकिन जो भी हो आप सिटी का नाम भी बताना। उसके बाद आपने लौकिक में क्या पढ़ाई की है, व्हाट आर योर एकेडमिक बैकग्राउंड, व्हाट इज योर एकेडमिक बैकग्राउंड। उसके बाद आप वर्तमान में क्या करते हैं, व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ। देन आपका रिलीजियस स्टडी क्या अभी तक आपने की है, कितने साल से आप स्वाध्याय कर रहे हैं, कौन से ग्रंथ आपने पढ़े हैं और आपको इसमें कैसे रुचि हुई, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। वो हम सबकी बात सुनेंगे तो एक दूसरे को मोटिवेशन मिलेगा। और इसके बस इतना सा ही इंट्रोडक्शन हमें चाहिए। तो विल स्टार्ट फ्रॉम नीतू जी। अनम्यूट यू या। हाँ, जय जिनेन्द्र। मेरा नीतू झा है। मैं लॉस एंजलिस से हूँ। मैंने इंडिया से बीए किया है, बैचलर ऑफ आर्ट्स, एंड देन आई एम अ हाउसवाइफ राइट नाउ। और रिलीजियस में मैंने अरम पाठशाला का कोर्स किया हुआ है। अनुभव जी के साथ 6 साल किया हुआ है। बस इतना ही किया है और कुछ नहीं किया। आपकी रुचि कैसे हुई इस मार्ग में? A family member, my mami ji, introduced me to Gurudev. Okay. When I was very young, and then in between थोड़े सालों के लिए कुछ और ही किया। रहू आमा के पे निकल जाओ पहले से। 1 minute, everybody mute गुरुदेव yourself. Yogini ji, you mute yourself. Others are getting disturbed. Okay. Yeah. Thank you. Thank you. Okay. Thank you, Neetu ji. Nice to hear that you have been connected to Gurudev from the beginning, and it's a privilege. You know, I have not seen Gurudev personally, but I have read his books and I have listened to him, and that is how we are all connected to the same path. Yes. Okay. Next is Suril ji Lakhani.
Jai Jinendra, everyone. I am Sri Lakhani and I am here in Orlando, Florida. Anyway, because I just see the one batch from the US, so that's why I joined. મેં join કર્યું છે અને basically means I did my MBA in finance and right now I'm running my own business. I have a print shop, a peer one, and since the childhood I am being a peer one. So if you consider about this, the dharmic one, I already covered Vitrag Vigyan and even Chetala and up to all those one up there. And yeah, I was just listening Swanubhuti ji in one of those, the Jesse and Jay, that the lectures ones, and I got those the informations. I already studied up this one recently, up that one, up to throughout those one, and that the entire course one. But I want to go into the much more deeper into it, so that's why I joined this the course. Nice to hear. Good. Next, Ashish ji. Jai Jinendra, everyone. My name is Ashish Jain. By profession, I am an engineer. I'm from Rajasthan, back in India, from Jaipur district, so very close to some of this. I live here in Los Angeles for last about 8 years. Have been in Los Angeles. I work in a software solutions company in IT field. I have been doing religious study for last about 10 years in different forums. I have done a little bit of Swadhyaya myself, but have been following a lot of Munis, Jana Shivir, and various scholars from Todarmal Smarak kind of group. I've been interested in this because of the background from family, my mom, dad, etc., my wife. They've been very kind of they have been doing a lot of study for a long time, and that kind of pulled me in, and I feel connected to it because it has helped me ground and be stable essentially. So I would love to learn more and follow more. Nice to hear. Good. Next, Rinku ji. Jai Jinendra, sir. I'm from Los Angeles. Done my master's in construction management. I do work for a construction management firm. I'm actually doing completed 3 years in Parmagam honors with Vivek sir from Malad, which is Hindi. And how I got interested, my parents have been instrumental in pulling me in the direction. They're very active. I've actually, fun fact is, when I was 3 years old, I did touch Gurudev's feet in Songar. So I have that lab. But in COVID, listening to Sanjeev ji and SP Bharil ji, because everything became virtual, it really opened up so many possibilities for us and helped me get more information. And with this being a little more English directed, that's why I'm rejoining, and I'm going to continue my one with the Hindi one. And I'm also part of that English translation group. I help with Vitrag Vigyan 1. I think you joined later, sir, but we had done Vitrag Vigyan, and now there's the number of people helping translate into English is so many, because when we started, there were only 12 of us. Right. So anyway, I'm really excited to get this English, speaking people, at least my kids, get more into, this dharmic knowledge. Right. So nice to hear, Inkuji. And, we need to start that translation department again in a very active mode, It has been going on, but slow. So now we need some we need some volunteers who are very active, So if you can spare some time, you join today's meeting at 9 o'clock and want to take it forward in a very fast manner, fast track. We want to fast track that process. And Swanubhuti ji will also be joining today and addressing and give a new direction to this department, which is already working since long. But then there are always issue comes up, and you have to solve those issues. So nice to hear that you have been connected to Parmagam since 3 years, and again you want to study this, so it's good. Mukesh ji. Jai Jinendra, everybody.
My name is Mukesh Shah. I'm from Brea, California, which is a suburb of Los Angeles. I have been a retired physician for past 2 years now, and I've been born and brought up in a Svetambar sect all my life. Up until 5 to 7 years ago, a very close friend of mine who is a staunch follower of Gurudev and very well learned man, you might have heard of his name, Dr. K. Gusalia, who kept on hammering us that our belief was not correct. What we are doing is really a wrong path. We should think about it, what we are doing. So initially we were very adamant about our own belief and could not relate to him. But one fine day, whatever happened, it struck us, and that made us thinking that what is the truth. So that's when our journey began, and we started thinking that what is a true Jainism and what is a true religion. So then I started listening to Gurudev Swadhyay, and then we were very fortunate being in LA. We had Ahmedbhai Gandhi, who was one of the last very close, sevak of Gurudev. Yeah. Started coming to Los Angeles and started living staying with us at our house. And we started listening to him also. And it happened where it became very clear to us that, true religion is not what we were following, but this is the true religion. And that gave us a really true definition of Saddev, Sadguru, and Saddharma. So we started really listening to it more. And during the COVID also, then I did a lot of Swadhyay with Sanjayji Godaji, Moksha Marg Prakasat, Chardala, and various Swadhyay that he was doing. I did continuously for 3 years. And that has inspired us more and more to go in depth into this thing. And our ultimate goal is to just do our own Swanubhuti and our own Moksha Marg. Very nice to hear, Mukeshji, and I hope that we all achieve our, aim in life and target in life and what we have. That's why we have joined all together. Next, Amitaji. Please unmute yourself. सॉरी, माफ कीजिए। मेरा नाम अमिता देसाई है। मैं भी लॉस एंजलिस एरिया में एनाहाइम से हूँ और मैं इंडिया से मुंबई से हूँ। और जब मैं छोटी थी तभी हमारे घर एक बार गुरुदेव श्री अपने जन्मदिन के दिन आए थे, तो वो लाभ हमें और हमारे फैमिली को मिला था। और मेरे पिताश्री और मेरी माताश्री बहुत ही धर्म में है, तो इसीलिए मुझे भी उनसे प्रोत्साहन मिला है। और यहाँ मेरे बच्चे हैं और फिर मेरे फैमिली होने के बाद मैं यहाँ टीचर बनी थी और अभी मैं रिटायर्ड टीचर हूँ और मैं पाठशाला में पढ़ाती हूँ छोटे छोटे बच्चों को, 8 साल के बच्चों को, जिसमें उनका करिकुलम है 5 अणुव्रत और थोड़ा सा कर्म का। तो जब स्वानुभूति जी आई तो मुझे ऐसे महसूस हुआ कि मैंने भी पूरा जैन धर्म सीखा नहीं है, क्योंकि थोड़ा यहाँ वहां से सीखा है। और मैंने कृपालदेव श्रीमद राजचंद्र जी का थोड़ा पढ़ा हुआ है, मोक्ष माला, ऐसे सब छोटे छोटे ग्रंथ पढ़े हैं। तो मैंने सोचा कि मैंने एक ऐसे पूरा 5 साल डेडिकेट करके पूरा सीखना है जिससे मुझे लाभ हुए, इसीलिए मैंने ज्वाइन किया है। जय जिनेन्द्र। Sorry, my Hindi is not so good. No. Please See, this class is basically Hindi English. So you have liberty to answer in English, Hindi. You can write in Hindi, English, Gujarati, any language. We are all comfortable. So don't hesitate. Yeah. Nice to hear about you, Amitaji. We'll be in touch. Sachin ji, next. जय जिनेन्द्र। मेरा नाम सचिन जैन है और मैं लेक फॉरेस्ट सदर्न कैलिफोर्निया से हूँ। मैं जनरली जैन सेंटर जाता हूँ। दैट्स वेयर आई मेट दिस जैन स्टडी ग्रुप
for adults स्वाध्याय करने के लिए. Uh, Initially, I come from Agra, Firozabad region in India, from Uttar Pradesh, and that region is primarily dominated by a lot of Jains over there, but never got a chance to actually explore that to that level until I came over here. And my mother-in-law actually encouraged me when I was in India to get connected to temple somehow, whatever means you get it. And here I found that opportunity. One fine day, I just visited this Swadhyay class, and yeah, it was amazing. It looks like I was missing all that information. I never questioned certain things, even though I was part of the community which is more dominated by Jains. But still, I'm learning, and that's the main motive for me to attend this session and continue that journey. Here, I basically I'm an IT professional, R&D manager, so in an IT firm. So that's what I'm doing currently. So yeah, that's what I'm looking forward to. Nice to hear about you, Sachin ji. Thank you, Next, Jayashinan. yeah, Shobana ji. जय जिनेन्द्र. मेरा नाम शोभना शाह है, मुकेश शाह की वाइफ हूँ. सो उन्होंने जो उनकी जर्नी बताई वो सब मेरी भी सेम जर्नी है. Usual, so we studied actually Param Kripalu Dev's Vachanamrut in depth. Also, I've kind of listened to all the swadhyas of Gurudev's Ishtopadesh, Yogsar, and Chaudhala. And here and there we also studied Samaisar. Like I said, like Mukesh said, that we got exposed to Gurudev because of Dr. Kirit Gosalia, and yeah, and I work for a Department of Veterans Affairs here I live in Los Angeles. So yeah, I work in IT department since 32 years. Almost time to retire and complete the Shastri course, I guess. Right. It's a good opportunity for you, because you have to spend your time after retirement, and this is the best that you can do. Yes. Nice to So hear looking about forward to this. Yeah, definitely. Vinodi Shetji. So my name is Vinodi. I'm in a Los Angeles area for last 40 years almost. Academically, I did Bachelor in Arts from India. And from my childhood, I got introduced with Atma Dharma was coming to our house. So was kind of, my father used to make me read it, and he always complains that his eyesight is not good, so I should read it to him. And I knew he wanted me to introduce to Atma Dharma. That's why he's kind of getting excused. His eyesight is not. Anyway, so since then, there is a part of me got curious. For a long time, so many things doesn't make any sense to me, because originally or basically we are from Swetambar Parampara, got our raised that way. So later on in life, it got mixed up, and many meaningful conversation doesn't happen because one thing is one being said one way and the other side is something different and all that. Anyway, after coming here, it got so many opportunity to read many things and get introduced our basics about Jainism. And I felt like now it's a time and it is a good opportunity to join this class so I can have my education right. Basics are strong enough so that I can understand more in depth. Yeah, So, nice Jai to hear Jinendra. about you, Vinodi ji. Thank you so much. Now next, Ayushi ji.
I think Ayushi ji is busy or she's not able to unmute herself. So next, Pratibha ji. Jai Shri, sorry. No problem. Yes, Jai Shri, everyone. My name is Ayushi, and I'm from Aliso Viejo. It's in Orange County near Los Angeles. And originally from India, I'm from Indore, Sadhana Nagar. And like from childhood only, we have been connected to Atma Dharma. Like from 8 years, I used to go to Pathshala. And before coming here, also we used to go to regular pravachan and Shastra Adhyan. So yeah, um, I have heard listened a lot of pravachans and काफी गुरुओं से सुनने को मिला है संजीव जी गोदा और राजेंद्र पंडित जी सुमति प्रकाश जी सो काफी लोगों का सुना है लेकिन I was not able to do self study ever because of education job and all that so this is a good opportunity for me where I can study and do self study और स्वाध्याय करके हम लोग उस शास्त्र को और उस धर्म को और अच्छे से समझ सकते हैं so and presently what you are doing? I'm actually not doing anything right now. I am a housewife. Oh, good. So Yeah, housewife is always a good opportunity, so you have all the time to study at your own time and, yeah. you can go deep into it. And when you have a responsibility or if you are doing a job, then it takes away most of your energy and time. So yes, there's a struggle over there. So nice to hear that you have that punya ka uday that you are a housewife. Yes, yes. Thank you. Thank you, everyone. Okay, good. Pratibha ji, next. Pratibha ji Dudhekar. So you are from Maharashtra? Maharashtra, Jai Janendra. 1 second, let me get this on. Off, I'm from Maharashtra, yes, from Nagpur. And I've been here a long time. I've done BSc from India. And then here I had done a medical technologies. I've been working in a hospital field for a long, long time. And I just recently retired in 2021 after the pandemic. Hospital went crazy. And both the son, they were very worried and upset that I'm still working. So they made me retire. So I'm home now. But unfortunately, it was very nice to listen to Shastri Sanubhuti ji during the Paryushan. Then I listened to Praman Sagar Maharaj a lot. My parents were very religious. My in-laws were very religious. My in-laws lived in Shikarji, and my father-in-law was a lawyer there, but they dedicated their life for Jainism. So, but all these years in this country, I live in Orange County. My life was very, very hectic and busy working and raising children. And finally, now I have time to learn about Jainism. So it was my privilege to listen to Shastri Sanubhuti ji. And when you guys told us that your classes, I'm really thrilled. And I think I'm starting from kindergarten. I'll say that. Right. I don't have much knowledge. Whatever I have is from my parents. So I'm excited to learn about our religion. Nice to hear about you. And since you are also retired, you have all the time at your disposal. So you will Yes. very fast. That much I can say. I'm looking forward to it. Thank you, Jai Janendra. Nice. Next is Mom. Yeah, unmute yourself. Next, Apurva Mehta ji. Hi, Jason, can you hear me? Yeah. Hi, sorry, I'm not able to turn on my camera. Actually, I'm driving. Jajendra, my name is Apurva Mehta. I am from the San Francisco Bay Area, actually. I've studied Masters in Information Management, and currently I'm working in IT at a company called ServiceNow.
So I have so regarding my Swadhyay study, I have studied Param Kripaludev Srimad Rajchandra Ji's Vachanamrut and also Jain Siddhant Praveshika. I've been listening to pravachan from a couple of pandits regarding certain topics, and I'm really excited. And this is an amazing group that I'm, as per the introductions made by the members. So I'm really looking forward to studying the Jainism topics in detail. Good. Nice to hear about you. And next again is Apurvaji. Is our Apurvaji Doshi? Yes, sir. Yes, sir. Jai Jinendra, sir. Oh, I Jai joined to just see that everything is okay for the first batch. Yeah. So what happened, that YouTube could not get started because there was some message that you need permission or something like that. So Okay. then I left it. Now the recording is already going on here, Oh, okay. recording to the cloud, So we can retrieve from there and then put it on Sure. YouTube No, later no on. problem. No problem, sir. You can sort out also this problem Sure. where the permission has to be taken and all. So Sure. Okay. Yes, sir. thank you so much. Apurvaji has been helping the whole Parmagam Honors group, as a whole. He's looking after the overall admin part, and he's involved in so many different departments, and he's really putting his time and effort, and simultaneously he's also managing his business and family, and he's also a student of Parmagam. And Can we see him as a person? Can you request him? Apurvaji, if you can put a Yeah, if you can give me 5 minutes, I'll just do that. I just joined up. yeah, because it's morning time in India, Sorry, time, no yeah. problem. No problem. But I'll tell about me later on. Now, next, Bharat Godaji. Jai Jinendra. Myself, Bharat Goda, live in Anaheim Hills area. I am in US for 20 years, born and brought up in Indore, India. Profession-wise, I am software engineer, working on web applications again for PIMCO in Newport Beach. I have not done any formal education on Jainism. I'm Digambar by birth, but I haven't done any formal education. So, and this got in. I'm not sure how I got introduced to this course, but it was almost 2 years back, and I tried to attend few of the courses, but they were running mostly in the Indian time zone. So after starting a month, and then they again changed the time based on the convenience, so I couldn't continue, and so that's why I joined it back after we came to know that this will be in the US time zone. So. Yeah, nice to hear from Bharatji, and I can ensure you that this time you will be completing 5 years, and you will not drop in between. And if you drop also, I will get you back on the course. Awesome. Nice. Meenaji next. Jai Jinendra. I live in the Los Angeles area. I was born in Kenya, and I've been in US for 43 years. And then, so currently, I've been studying with Rajni Bhai, with the Jain Study Group. And I came to know about this course a couple of years ago when Nupurji did it. And she really encouraged us that time. But I think this time I got convinced because more of our members were joining. So I thought it would be easier to do some homework together. And I've been attending Arun Vijayji's classes in the morning from India. And currently I'm involved in organizing an art platform for the community to manifest Jain virtues. Thank you, Meenaji, for your introduction. And we look forward to have a grand 5 years with you. Next, Swetaji Jain. So mom is yours only, or it's a different? Yeah. Hello, I'm Shweta. I have joined this Parmagam Honors
another group I had joined that was Indian time, but I am in US right now, and wanted if this would be more feasible for me, so I've joined this group. And I am in right now. I am in Seattle, Washington, and yeah, it's been a year since we shifted to US, and I got introduced to this course from a relative who has done this, and I thought even I should. I don't know much about Jainism, so I wanted to understand more concepts, and so I wanted to understand about life and everything. So I thought I'll just try to understand and join this course. Yeah. Yeah, nice to hear, Swetaji. And presently, you are working or you are? I'm a housewife. I'm not working, and yeah, I have an arts background. Good. Yeah. So you can help us. So those who are housewife can help us in translation also work. Maybe you will be translating. That is one part, and you will be learning also. That text gets uh, automatically memorized. So if you can spare some time for translation, do let me know. So I will join that group. I'll make you join that group, and we have a meeting every Thursday at 9 p.m. India time. And today's lecture will be supervised by Swanubhuti ji herself. So maybe we can look forward to that part also. So I think Sarojini is left, and mom. Yes, that is the one. It says. I'm sorry, it's coming as a echo. Maybe I need to sign up from one and go for only one. No problem. Sarojini, you introduce yourself. Yeah, I think we need to mute the other. Other people. I'm trying to unmute the other one. 1 minute. Now it's okay. Okay. My name is Saroja. So I think you have kept your mobile. You are having two connections, right? That's why the sound. Yeah, my iPad. So you exit one of those, then it will be all right. Anyway, we'll get your introduction done next class. No problem. Okay. So you mute yourself now. Everybody mute yourself. Now I'll be giving you my introduction. I was not into religion at all, although I was born in a Sthanakvasi Jain family, but I never got interested in religion. In fact, my whole family was also not very much interested in Jainism. They were all Ram Bhakt. My grandmother, my father, they were very fond of Ram Bhagwan, and but we were by caste we were Sthanakvasi Jain, so never really got connected to Jainism, and I was totally a materialistic fellow. But in one of the like in the year 1997, I was just attending the Pratikamana every year. That was the only activity that I used to do. So when I attended that Pratikamana, that lady who was doing it, she asked me 3 questions to all of, she said that, who am I, where I have come from, and what is my true nature? And, that question appealed me because I never thought on those lines. And then subsequently, she also offered us that we are running a group, of Swadhyay, and those who are interested in getting the answer to these 3 questions, they should join that group. And that's how I joined that group. We were around 25-30 people at that point of time. And that's how, that was in Sthanakvasi only. And they were all connected to Sadhviji. And that's how I got connected to that Sadhviji. And
And then she was studying from Gurudev's Pravachan Ratnakar. So the first time I saw that book, I thought that this is a book meant for them to teach us, you know. Then I didn't knew that this is a discourses on Samaisar. So subsequently I got to know that, and then I bought those 11 part, you know, Pravachan Ratnakar, that is Swamiji's Pravachan on Samaisar, the 18th time. Then we have, of course, Samaisar Siddhi, the 19th one. But at that time, it was only this one, 18th time, which was the latest one. And I got the 11 parts and I started reading one by one. And that's how I got interested in this religion. And I thought, okay, this is what needs to be done. And subsequently, in the year 2000, Pandit Sumat Prakash ji came to Bombay. And that is the first time that we got connected to Digambar Parampara and Digambar Sampradaya. And from then on, in the first lecture itself, he started with these two lines. पूज्य गुरुदेव ना होते तो आज क्या होता, सतदर्शन का सूर्य अस्त हो गया होता. And from that line itself, I realized that this is what I was looking at, because we were studying the scriptures, but there was something lacking, you know. And then it was a shibir for 35 days in Borivali, Mumbai. And I used to stay in Daisar, so it was close by. So I attended that whole 35 days. And it started with Jain Siddhant Praveshika, Dravya Gun Paryay and Samanya Gun and all. And that was very interesting because we never studied the fundamentals. We were into Samaisar, but we never knew the fundamentals. So that was also very nice. And in the evening, he used to take that life of Gurudev Sri Kanji Swami, you know. And that's how I came to know the struggle that Swamiji went through during his initial years, and how he got converted from Sthanakvasi monk to Digambar Sravak, you know. And that struggle was very interesting. And from there, we also got motivation, and that Sadhviji, along with us, she also got motivation, and we all converted to Digambar. So it was year 2000, and then I was constantly in touch with Panditji, Sumat Prakashji, and that's how. So I was doing business. I had a business, and I was having some other type of business earlier, which was not very legal, you know. So when I heard these lectures from Panditji and his inspiration, and I left that business, and I started a new business where I don't have to do any illegal thing, and it was all very legal. And in between there was some struggle, and then later on all things went very well, and I did very good in that business. And I was studying also and doing business, and normally as we have a routine life, but this my deep interest keep on developing and developing, and on this side I prosper money wise also. And I had an office in South Bombay, and then I was expanding and planning to buy a new office in Santa Cruz in Mumbai. And by that time, but I was asking Panditji, I was taking guidance from Panditji for everything that I had done in my life, whether changing that business, it was all his inspiration. He was like a mentor to me. And then he told me that whatever you have earned is enough, now you leave it. And that was in 2011, 4th November. And that is the day I thought that I will take a retirement from business. And it took me, he was there for 1 month in Borivali. And then I decided that no, this is what I need to do. And in between, in 2009, as my business flourished, I bought a 2-bedroom flat in Borivali itself near the Mandir. And so now I was more closed, and that 1 month event was also in Borivali. And
I connected to this Borivali Samaj. Earlier, I was connected to Daisar Samaj, and there was that we built up a mandir also, by the inspiration of Pandit Sumat Prakash ji only. And things were going very good for me. And that suddenly Pandit ji asked me to retire, and that was something I didn't expect. But in the day I read that Kalash from Samay Sarji, that you take Acharya Amrit Chandra Dev inspires to take a retirement for 6 months and see that you are able to experience your soul or not. So I also always thought that I will retire someday and let me make some money that is, sufficient for me for this life. And I was having that thought in mind. But Panditji really inspired me to take retirement. And so I didn't bought that office, which was I supposed to bought. But I just thought that I will take a permission from Panditji and then only I will bought it. So that helped me that I didn't bought that office, and I retired that day itself. And it has been 12 years now. So at that time I was 44 years age, and now I'm 56. Academically, I have done BCom honors from Kolkata University, and that's where I was born and brought up. Then for this business purpose, I came to Mumbai in 1990. And from then on, I am here in Mumbai only. And since I retired in 2011 and in 11 and in 12, I attended first Prashikshan Sibir, that is 18 days Sibir, that happens during the summer vacation conducted by Todermal Smarak Trust. And there I enrolled as a student, as a Prashikshan student. And that's where I got good guidance from Pandit Dharmendra ji. He was my class teacher in that particular class. And as you all know that after Sanjeev ji Goda, Dharmendra ji also left us. And but he was a very good teacher to me, and I really learned a few good things from him. So then after that Prashikshan Sibir, I got a confidence to teach, and I started teaching from that year itself. And I was teaching earlier the kids and then the senior people. And every year that teaching was, they had a group Shibir at 80-90 places simultaneously in MP, MP and UP both together. And that's where I started my career as a teacher. And that was for a very short period of 8 days, 10 days a year. And that was going on. And then Panditji also inspired me to join this Mukt Vidyapit from PTST. Mukt Vidyapit is a independent correspondence course. And it's a Shastri course, but it's a correspondence course. There is nobody that is going to teach you. And it was on our own that we have to study and answer those question papers. So it was again a 5 years course, and I joined that course. And by the time I finished that 5 years course, this Parmagam honor started. And I knew Swanubhutiji because when I changed my business from the earlier business, I worked under Swanubhutiji in an insurance company. And then, but I was independent. I was freelancing, but she was an employee of that company. And that's how I got connected to her through a common friend of us. And I was already deep into religion, and this opportunity also provided me to interact more with Swanubhutiji. And she was already a Shastri and an MBA. And I learned a lot of things from her during my association with her as a business associate. And that's how I started my new career. And then, of course, I diversified I was a mutual fund distributor, and I was into all the financial products. And that was what I was practicing as an independent financial advisor. And I made money from that. And then subsequently in 2009, I started another business in real estate. So I was running two businesses simultaneously. And then in 2011 end, I retired from all. And it has been 12 years. The journey has been very exciting and very fruitful, I would say, because I feel that I have born again, because
when you are involved in business, like most of the time you are in business, and even if you are not doing business, the thoughts keeps on going on that I have to follow up with this, and I have to solve this and that, this and that. So all that was there, but since I had an interest, so morning 5 to 10 was my personal time. I used to study at home only in the morning, 5 to 6, 7 o'clock, and then I used to go to temple, and I had Abhishek every day, and still today I'm doing Abhishek every day in Mandir, and that's what has helped me in gaining Vishuddhata. And so this kind of I'm into now full-time study. And then this Parmagam honors started in 2016. So Swanubhuti ji knew me, and she offered me this teaching option, and that was another turn in my life. And the kind of students that we have in Parmagam, like you are very Ruchivan student, I would say, and that helped me further in my studies. And yeah, that's all going on. I have completed so far 5 Parmagam honors batches starting from 2016. And in 2016, I had one USA batch, and there were students from Dallas, Niketa ji Parekh, then we have Prabhaji Monot, and we have Jyoti Ben Pancholi, you must be knowing, somebody must be knowing. And then there were some US other students, some were from Canada and some were from Australia. But in total, that all were around 16 students. And then I was doing 2 live batches, one in Ghatkopar and one in Dadar. And that's how 3 batches I was doing simultaneously. And then I did one batch in 2018, which is also complete, and they are running that Parmagam Honors Discussion Club. It's a very good club. Every Saturday they meet and they invite one guest lecture every Saturday, and there is a story, and then there is something on studies also, our academic studies, starting from Vitrag Vigyan and all, they are doing it. So that is also a very good initiative that the whole class of 2018 is doing. And then subsequently I did 2019 batch, which is almost complete. Last paper is going on, and that is being taught by some other teacher. So that my role over in that batch is also complete, and there are 50 students. And I started with those 50 students, and still today we are with 50 students. In between, 2-3 students tried to drop, but I brought them back, and they are now doing very fine. So you can imagine that 50 students starting and 50 students ending, that is something unique, in Parmagam honors, that we have 40 batches running across with 40 teachers, and in total we are around 2,500 students, So it's a big movement, and it has been all because of the mastermind of Swanubhuti ji, and she is a rare talent, and she is doing great things in Jain Dharm's Prabhavna. You can imagine that without any place, without any university, virtually she has developed this base of 2,500 students, and all are people like you, who had this inclination to study Jainism but never got a chance, and they are connecting back to this Jainism, and they are really very happy, and everybody's life has changed. That is for sure, and your life is also going to change. I'm very sure. And that is all for my introduction. But again, I will have a punchline, last line, that I am again a student at heart. So I will be also learning from you. And today also I got inspiration for so many people relating their experiences. And so I learned from everybody. And so this will be I am not a teacher and you are not a student. We are all mutually doing this Swadhyaya, and this is a mutual beneficial relationship. So now I want to clarify one thing, like looking at your introductions and your inclination towards English batch.
So in this batch, we are going to study through Hindi textbooks. Okay. So these Hindi textbooks are initially all were written by Dr. Barilji, and most of the books that we are going to study in this 5 years course will be, of course, written by Dr. Barilji, but then there we have other books also. So I'll be sharing this syllabus with you in this group. And so one thing I'm finding out is that many of you are interested to study in English. That is one thing. But this batch will be Hindi English. So predominantly it will be Hindi. I'll be following Hindi text. And since I will be following Hindi text, I'll be more into Hindi. But having said that, I'm running an English batch since last year, 2023. And there was a bit of struggle for me because I thought I can teach in English also. But when I started teaching, I found a few challenges and I am still sorting out that. So that batch is 2023. We are at the end of second sem. Okay. So that is going on, and that I'm going to continue for next 4 years. So we are almost 1 year old. So we are going to continue for 4 years. So they are 1 year ahead of us. And then I'm starting a new batch in English, exclusive English, on Saturday, this Saturday at 8:30 a.m. India time. And that will be exclusively in English. We will be following English textbook. So that is a difference. So those who are looking to study only in English, they can join that batch. And here we will be into Hindi more and English less. But since my language is like, it has happened like that I always use English words in between. But I will try to use Hindi words maximum. And of course, whatever I know in English, I can put that word in English also. But predominantly, it will be a Hindi batch with Hindi textbook. Okay. So this Saturday batch, the timing is 8:30 a.m. India time, 8:30 to 10:30. So this batch is also going to be 8:30 to 10:30 India time, but it is here in India, it is Thursday morning. For you, most of the Los Angeles people, that will be Wednesday evening. Okay. So this is one clarity that I have done. So whoever wants to exclusively English, you can join that Saturday batch. But I'll tell you something, that the textbook there in English, the translation is not of that good quality, and that is itself a dragger for me, and I've been struggling to cope up that. And we don't have a good translation in place right now, but we are trying. And today's meeting is going to be a landmark meeting because we are going to bring so many changes, because now we have Chat GPT also. We can take help of Chat GPT also, and we are trying to formulate getting new SOPs in place. So that will take some time. But having said that, because of my last year 1 year struggle, I have been able to get all the good words in English, through vocabularies. And the words these people have used in English translation is not very good words, they are some are very ambiguous, but we can't help it. Whatever we have is what we can have it. So in between, I was involved in a project where we were writing new articles, taking 50 articles from the old syllabus, but we have written it in a new way. And that portal is going to be launched, I think, in Songat Pratishtha. That can be launched, and if that is launched, you will have access to that 80 articles. These are all fundamentals only, and that has been written very nicely by one ex-student of mine, but she is very good in English, and she is Vijal Sheth. Somebody I would like to introduce her to this batch also. So she has got a very good command over English, and she has got a very good
flair for writing also. So she has been a major content maker in that project, and that project is coming up. It's not started, but I hope that during the Songat Pratishtha that gets launched. If that gets launched, you will have access to all those articles. Until then, I'm not supposed to share those articles because there are some intellectual property rights. Some issues are there with them. And of course, the principal is Vitragvani team only. So sooner or later, we will have access to those articles. And that is going to help you, those who want to study in English. But those who are comfortable with Hindi, like most of you, I suppose we all follow Sanjeev Ji Goda and even Bharil Ji and Gurudev Sri also. Everything was in either Gujarati or Hindi only. So everyone knows Hindi and everyone is connected to this Bollywood serials and movies, and so there is nobody on this earth who is an Indian and who does not know Hindi. So in Hindi, you have one advantage that we have a lot of good writings in Hindi, and we have most of the granths translated into Hindi and Gujarati only. So English, there is not much available, and if it is available also, the quality is not that good. So there is a challenge in English from that front. But if you are comfortable, I would recommend this Hindi batch only. And simultaneously, if you want, you can listen in that batch, okay? But you should be enrolled in this batch only. And during daylight saving in April, this class will get advanced by 1 hour as per India time. Like today, we started at 7:30, but next class, when we come up in next Thursday, that will be 8:30 India time, okay? So only because of daylight saving. So again in April, we've changed to 7:30 India time. So that is the difference. And that batch will go on at 8:30 India time only throughout 5 years. That is the English batch. Okay, so we already have some 18 students from India and abroad all put together. So those are people who want exclusively in English. So that batch is like that. But I have told you about the limitation, the textbook, but I've been trying hard, to get that rhythm and that flow. But I would say I'm gradually improving, but I will not say that I have improved of very good quality 100%. So there is a struggle there. So I've told you everything frankly. Now it is your choice. But I would recommend, if you know Hindi, you do Hindi. But if you don't know Hindi at all, like some people are always like that, so then you can join that batch also. So you will be connected to one batch as a principal batch, and then you can have access to all the lectures that are there, other batches also. And even Swanubhuti ji is taking every day one class, either it is Pravachan Sar or Samay Sar for 5 days a week, and then on Sunday she's teaching Apt Mimamsa. That is also doing very good. So you have access to so many information right now. But if you are joining this class, you have to attend live, preferably. Sometimes if you are here and there, you have some problem, you can always catch up on recording. But my preference would be to catch on live every time, because I'll tell you one thing, if you are keeping your video on and if you are connecting on Zoom live, you still are focusing on this. And in between, I also ask few questions. So in between, I also ask you to read the chapters. So in that way, you will be connected to this class and you will be more attentive. That is what makes the difference. And if you are listening on a recording, in between somebody may call you and somebody may visit you and some other things come up here and there, and we are not that serious at that point of time. So I would say you miss most of the picture if you are picking up from recording. So you should always attend live, and that is my recommendation. And
the other batch that I have 50 students. On an average, 30-35 students attend live, and the rest of they catch up on recording. That is what my experience is. And then I had this batch of USA. There were most of the students were live, So 2016, all 3 batch put together, I had around 18 and 16 and 10. So maybe around 50 students, not 50, around 40 students or put in total. And they were all, very good students. But subsequently in 2018 also we had very good students, 19 also very good students, bearing someone, some people are doing for the purpose of getting a certificate. I don't know what their purpose is, but our emphasis in this Paramagam honors is on the practical part. What you can do in your practical day-to-day life, how you can apply these principles in your practical day-to-day life, and how you can be happy in that particular situation. So our endeavor is like that across all the batches. Even if you join any Paramagam honors batch, that is what we do. Practical application is what our emphasis is on. So starting this batch, we will have predominantly in Hindi, because I'll be reading the Hindi textbook. Okay. And as I said, English textbook is always a problem. But so this will be more on Hindi, but as is you can see my style, I am more comfortable now in English. So the English words also will come in between, but I will try to be in Hindi mostly. So this today's first Swadhyay, we are not going to start anything from the syllabus. Even Balbodh 1, 2, 3 that we are going to start from next week only. So this Balbodh 1, 2, 3 is not part of the course, okay? But since we are starting in November right now, so we have enough time to cover that Balbodh 1, 2, 3. So we will be covering it very fast track kind of Balbodh. But then Vitrag Vigyan will be doing it in very deep. So ये हमारा क्रम रहेगा 5 साल का. I will share with you the पूरे कोर्स की रूपरेखा देख लेते हैं. हम ये पूरा 5 साल का कोर्स है. प्रत्येक 6 महीने में एक सेमेस्टर होगा. सो 5 साल में 10 सेमेस्टर्स होंगे. सो ये पहला सेमेस्टर है जिसमें हम बालबोध पढ़ेंगे, बट बालबोध हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है. सो एग्जाम्स में उसके क्वेश्चंस नहीं आएंगे. अब पूरा सिलेबस जो है 3 पेपर है, 300 मार्क्स. ओके. सो उसमें से तीनों पेपर के, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, तीनों पेपर के 50 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स होंगे जो आपको ऑनलाइन देने हैं, और वो होंगे आपके जुलाई में. जैसे अपना ये स्टार्ट होगा तो जुलाई में आपका पहला ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स आएगा. फिर दूसरे सेमेस्टर में वो जनवरी में आएगा. ठीक है. तो हर 6 महीने के अंत में आपको ये ऑब्जेक्टिव्स देने होंगे 50 मार्क्स के. अब 50 तो 150 मार्क्स हो गए. अब बाकी जो 150 मार्क्स बचे हैं उसमें आपके ओरल असाइनमेंट्स होंगे 30 मार्क्स. एक होगा गणधर मूल्यांकन, जहां आपको जो क्लास में पढ़ाया गया है उसकी समरी करनी होगी. ठीक है. तो वो एक 15 मार्क्स का होगा, गणधर मूल्यांकन जिसको हम कहेंगे. और 15 मार्क्स होंगे वाइवा. वाइवा में हम आपको पूछेंगे 3 क्वेश्चंस. या तो आपने जो बोला उसमें से पूछेंगे, या हम अलग से पूछेंगे जो सिलेबस में है हमारे, उसमें से ही पूछेंगे. वो 3 क्वेश्चंस आपको रिकॉर्ड करके हमें वॉइस मैसेज से भेजने पड़ेंगे. सो ये दोनों तो हो गया ओरल. उसके बाद आपके 3 पेपर्स रहेंगे, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी. इसमें आपको जो पेपर पढ़ाया गया है उस पर आपको एक समरी लिखनी है,
वो समरी 2 पेज से लेकर 6 पेज तक हो सकती है। लॉन्ग स्क्रिप्ट जो पेज होते हैं स्टैंडर्ड हमारे A4 साइज के जिसको हम कहते हैं, वो पेज के आपको 2 पेज से लेकर 6 पेज, आपकी इच्छा है। ये इसमें कुछ इवैल्यूएशन नहीं होगा और ये आपको खाली टाइम पे सबमिट करने हैं। हम आपको 21 दिन देंगे वो पेपर कंप्लीट होने के बाद। जैसे अभी हमने वितराग विज्ञान कंप्लीट किया पार्ट 1, ओके, तो जिस दिन वो कंप्लीट होगा उस दिन से आपको 21 दिन का समय दिया जाएगा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पेपर 1। ये आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी लिखने हैं, उसमें क्या लिखना है वो भी हम आपको बता देंगे उस पेपर 1 के अंत में। उस हिसाब से आपको, आपका चॉइस है 2 पेज से 6 पेज, 6 पेज से ज़्यादा किसी भी हाल में नहीं लिखना है। और उसका इवैल्यूएशन नहीं होगा, मतलब आप सबमिट करोगे यू विल गेट फुल मार्क्स 30 आउट ऑफ 30। सो 90 मार्क्स तो ये हो गया पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। हर एक पेपर के एंड में ये आपको 21 दिन दिए जाएंगे ये समरी कंप्लीट करने के, ठीक है। एक्सेप्शनल केस में आप 1 पेज में भी कर दोगे तो चलेगा, और भी एक्सेप्शनल केस में जो लिख नहीं पाते हैं तो आप वॉइस मैसेज भी कर दोगे तो चलेगा। बट प्रेफरेंस हमारी रहेगी कि आप लिख के ही, मूडल एक ऐप होगा उसमें आपको अपलोड करना है। वो आपको सारी चीज, थोड़ी टेक्निकल चीज अपूर्व जी अपने को गाइडेंस देंगे, मेरे को भी ज्यादा उस पर नॉलेज नहीं है। मूडल ऐप और ये सब थोड़ा वो बाद में आपको समझाएंगे। दूसरी चीज, तो 30 मार्क्स तो पहले हो गया GM और वाइवा ओरल असाइनमेंट। फिर ये 90 मार्क्स होंगे 30 30 30, ये कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। अब बचे 30 मार्क्स, वो होंगे LCPA लाइफ चेंजिंग प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। ये 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैनेजमेंट की ओर से, 3 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। मोस्टली ये बैच के लिए आपको मई में मिलेंगे ये क्वेश्चंस, मई में, और दूसरे बैच के लिए वो नवंबर में होंगे, अभी भी रिलीज नहीं हुए हैं, अभी ये महीने में वो रिलीज होंगे 3 क्वेश्चंस। लेकिन वो आपके लिए नहीं है, आपके लिए तो मई में ही रिलीज होंगे। तो वो क्या होगा कि पेपर 1 से 1 क्वेश्चन, पेपर 2 से 1 क्वेश्चन, पेपर 3 से 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा। वो क्वेश्चन में आपको एग्जाम्पल्स दिए जाएंगे कि आप अपने जीवन से ये प्रैक्टिकल बताइए कि आप इस केस में क्या करेंगे। तो आपने क्या सिद्धांत समझे हैं उसकी भी टेस्टिंग हो जाएगी, और ये आपको प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्टेड होंगे, इसलिए इसको आप अपने लाइफ पे भी घटा सकोगे। तो इस तरह का ये तीनों क्वेश्चन प्रैक्टिकल होंगे, एग्जाम्पल्स ही होंगे, वहाँ थ्योरी का कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो इस तरह से वो 30 मार्क्स के होंगे, 10 10 10 3 क्वेश्चंस रहेंगे, और उसको भी आपको वॉइस मैसेज के थ्रू हमको भेजने हैं और हम उसका इवैल्यूएशन करेंगे। तो गणधर मूल्यांकन और वाइवा का भी इवैल्यूएशन होगा, उसमें मेरी चॉइस है, हम आपको 30 में से 15 भी दे सकते हैं, हम आपको 30 में से 20 भी दे सकते हैं, और बहुत अच्छा रहेगा तो हम आपको 30 में से 30 भी देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो 2 जो ओरल्स है वो दोनों हमारे हाथ में है, टीचर के हाथ में है। वो टीचर वहाँ अपने हिसाब से आपके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंगली मार्क्स देगी। उसमें आपका कॉन्फिडेंस देखा जाएगा, आपकी बॉडी लैंग्वेज देखी जाएगी, आपके उत्तर की क्वालिटी मुख्य है उसमें देखी जाएगी। तो वो 60 मार्क्स हमारे हाथ में है, आपको कितने मार्क्स देने हैं। बाकी के जो 90 मार्क्स है वो हमारे हाथ में नहीं है। आप टाइमली सबमिट करो, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अगर आप टाइमली सबमिट नहीं करते हो तो 2 मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे। तो ये 150 मार्क्स इस तरह से हो गए। 150 मार्क आपको लाइव ऑब्जेक्टिव्स देने हैं ऑनलाइन। जब आप वो एग्जाम शुरू करेंगे, उसके पहले आपको इंस्ट्रक्शन आ जाएंगे। वो एक बार शुरू करेंगे तो आपको 1 स्ट्रोक में ही कंप्लीट करने होते हैं, और जैसे ही आप कंप्लीट करोगे आपको कितने मार्क्स मिले हैं वो बता दिया जाएगा, और आपने क्या मिस्टेक्स की उसका क्या करेक्ट आंसर्स है वो भी बताया जाएगा उसी समय। तो वो आपको उसी समय वो रिजल्ट मिल जाएंगे, और ये रिजल्ट हम टीचर्स की ओर से आपको भेजे जाएंगे, और सारे ही रिजल्ट्स कनेक्ट होकर के एग्जाम्स के, जैसे अभी जनवरी में एग्जाम्स होंगे तो फरवरी में एक इवेंट होगा, एक सेंट्रलाइज्ड इवेंट होगा जो स्वानुभूति जी एवरी ईयर
एवरी 6 मंथ्स करती है, उस दिन रिजल्ट्स भी अनाउंस होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और बाकी सब लोगों को क्लास में भी रिजल्ट्स मिल जाएंगे, उनके मूडल ऐप में आ जाएंगे सबके प्रत्येक के रिजल्ट। वो ये इवेंट होने के 1-2 दिन बाद आ जाते हैं, तो वो सेंट्रली सब कुछ हो जाता है। हम लोग भी मार्क्स उसको भेज देते हैं, वो मूडल में भेज देते हैं, तो इस हिसाब से वो सारा कनेक्ट होकर के यू विल गेट योर रिजल्ट्स इन मूडल। इसके अलावा आपको एक बेंगलोर यूनिवर्सिटी से सर्टिफिकेट दिया जाएगा, वो एकेडमिक सर्टिफिकेट है, उसके बेस पर आप आगे कोई दूसरे कोर्स भी कर सकते हो। कहीं पढ़ाना है यूनिवर्सिटी में तो भी वो सर्टिफिकेट मान्य रखता है। अभी वो रिसेंटली टाई अप हुआ है, 1 साल ही हुआ है शायद, तो उसके लिए जो आपकी स्टैंडर्ड फीस होती है 1500 रुपीज, प्लस आप एब्रॉड है तो कुरियर चार्जेस एक्स्ट्रा रहेंगे, लेकिन जो इंडिया में है उनको बुक्स फ्री कुरियर कर दी जाती है। तो आप लोग सबको बुक्स ऑर्डर करने हैं आज के आज, सो आपको जल्दी से जल्दी आ जाए वो बुक्स, और फिर वो अपन तब तक सॉफ्ट कॉपी हम शेयर कर देंगे ग्रुप में, तो आप क्लासेस तो स्टार्ट हो जाएगी अपनी नेक्स्ट वीक से। तो ये रहेगा पूरा, हमने आपको कोर्स क्या है वो बता दिया। इस पर पे किसी को कोई प्रश्न हो, डाउट हो तो पूछ सकते हैं। आई विल बी मोर प्लीज टू आंसर एनी डाउट्स इफ यू हैव, अदरवाइज आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। राजेश जी, क्या मेरे पास हुक्म चंद जी भरेल जी के दिए हुए सभी पुस्तक है, ये 6 पुस्तक, पर लेकिन वो इंग्लिश में है। ओके, तो आप लोग ये बैच के लिए तो हिंदी ही ऑर्डर कीजिए, ठीक है। भले इंग्लिश आपके पास रहेगी, बट इंग्लिश मैं आपको हिंदी इंग्लिश सबकी पीडीएफ शेयर करूंगा। तो एक तो ऑप्शन ये है कि आप वहाँ प्रिंट आउट निकाल लो, जैसे कि मेरे बहुत से स्टूडेंट करते थे, बिकॉज यहाँ से वहाँ भेजने का जो कुरियर चार्जेस है उसमें टाइम भी लग जाता है और वो भी लग जाता है। तो आप वहाँ प्रिंट आउट निकाल के, स्पाइरल बाइंडिंग होती है तो हम लोग ऐसे ही करते हैं, जो हमें ऑनलाइन डाउनलोड करके उसकी प्रिंट आउट निकाल के उसकी स्पाइरल बाइंडिंग हो जाती है, तो इट वर्क्स एज अ बुक इटसेल्फ, और वो एक ऑप्शन है आपके पास। अदरवाइज यू ऑर्डर कुरियर से आ जाएगी, इट माइट टेक 1 मंथ on an average, but if you are lucky it may come to you in 10 days also, but generally it is in that it takes 1 month, but वो करना ज़्यादा प्रिफरेबल है, बिकॉज कि 1 महीना कोई ज़्यादा टाइम नहीं है, लेकिन वो आपको प्रॉपर बुक्स आ जाएगी तो आपके परमानेंटली आपके वो शेल्फ में रहेगी, इवन इफ यू कंप्लीट दिस कोर्स। जैसा कि देखा गया है कि जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो ये कंप्लीट करते हैं, जो रुचिवंत होते हैं, वो पढ़ाने भी लग जाते हैं। तो आज की तारीख में करीबन जो हमारे एक स्टूडेंट है वो पढ़ा भी रहे हैं, परमागम में ही पढ़ा रहे हैं, तो सब कोई ना कोई जानते भी होंगे उनको। तो जो रुचिवंत होते हैं वो तो पढ़ाने भी लग जाते हैं, तो उनके पास बुक्स रहेगी परमानेंटली, तो वो अच्छा रहेगा। अदरवाइज आप प्रिंट आउट भी निकाल लेते हो तो आई डोंट माइंड एनीवेज। और सब लोग, बहुत लोग तो सॉफ्ट कॉपी ही रेफर करते हैं, लाइक यंगस्टर्स, यू नो, सब लोग सॉफ्ट कॉपी प्रीफर करते हैं। सो दोज हु आर कंफर्टेबल विद सॉफ्ट कॉपी, उनके लिए तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वो वहां से ही एक्सेस करेंगे। इनफैक्ट विल बी शेयरिंग द स्क्रीन ऑल्सो टेक्स्ट बुक की, तो आपके पास अगर कुछ भी नहीं है तो आप स्क्रीन से भी पढ़ सकते हैं, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इतनी तो बात हुई कोर्स के बारे में, आपको थोड़ी जानकारी मिली। अभी हम अब शुरू करते हैं स्वाध्याय के लाभ। पंडित टोडरमल जी ने सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका में कुछ प्रश्न उत्तर उठाए हैं, और उसमें उन्होंने ये स्वाध्याय से क्या लाभ है वो 10 पॉइंट बताए हैं, वहाँ वो अपन स्टडी करेंगे। दूसरा, ये जिनवाणी का मिलना, मनुष्य बहु मिलना और उसकी रुचि होना, ये उत्तरोत्तर बहुत दुर्लभ है। उसका भी एक आर्टिकल है, वो भी मैं शेयर करूंगा, और वो भी आप रेफर कर सकते हैं। अपन क्लास में तो समय नहीं मिलेगा नाउ,
अभी हम लोग ने 7:30 को स्टार्ट किया ना, तो it is now almost 8:45 India time. So it is almost 1 hour and 15 minutes has passed. And by the time I study this 10 points on Swadhyay, I think Swanubhuti ji will join and she will take over. These books you can download, and I don't know whether it is available on Kindle or not, but mostly it should be available. If it is not available, we'll put a request to the management to get you available in Kindle itself. I think Apurvaji, if Apurvaji is there, he can guide us. I don't know. Yeah, currently it is not there, but it's a good suggestion. I will look into it. We'll see, how we can do that. Sure. Thank you, Apurvaji. So you might have in Kindle also, but otherwise you can download it and get it done on Kindle also. I think mostly people do that way also. So that is not a problem. So anyways, now we'll start this Swadhyay. We'll be sharing one Google Drive, and in Google Drive, you will have access to all the course related books, course related books, reference books, everything is there in the Google Drive. So Apurvaji, there is a Gunasthan book on that Google Drive. I think it is in the 6th sem. Okay. So if you can share that book right now, so we can have it on screen if you are able to do that. Gunasthan Praveshika in Hindi, in the 6th sem, probably it is in the 6th sem. You just check it out, that you will have. So Apurval will take some time to, share it on the screen, but we'll trying to that. And if it is not that, I will share the screenshot, I can, I'll see if I can share it from this book itself. Yeah, I can share it in the group. That much I can do. So you will have access. So one more thing that we will discuss after Swanubhutiji's lecture, that we will be requiring You will have to make me host. Huh? You will have to make me host. I've opened the I'll book. make you host. 1 minute. So I have made you co-host, Apurvaji, and thank you for all your help and joining in especially for our benefit. That's a very nice gesture. So in meantime, I will share the question answers. Yeah. So it's a very small kind of 1 page only. So I will just share the screenshot. So. Sir, is my screen available? Not yet. I've shared my screen. No? No. Anybody can see? No. No. Okay, 1 second. So I have shared that screenshot in the group, so you can get access to that. So, dekho Todarmalji's words. So the Manglacharan that I did was also of Todarmalji. I will explain you the meaning the next week of that Manglacharan. So that Manglacharan is by Todarmalji, and in that the last line was, "Ho meri aisi dasa jaisi tum dhari hai." So we begin our course with that inspiration that we also want to become just like you, the Panch Parmeshthis. So we have very high vision for ourselves, and when you work something with very high vision, automatically your efforts are also of that level. So हमारा पुरुषार्थ भी
उसी प्रकार का हो जाता है। जितना बड़ा हमारा लक्ष्य उतना शार्प हमारा पुरुषार्थ। सो हमने बहुत बड़ा लक्ष्य रखा है, शुरुआती वहां से की है कि भगवान बनने जन्मे हम। तो हमारा जन्मी ये भाव हमें ये मिला है, ये देवगुरु शास्त्र मिले हैं, और ये हमें परमागम ऑनर्स कोर्स मिला है, और ये हमारी जो अभी रुचि हुई है, बिकॉज मेकिंग अ 5 years कमिटमेंट इज नॉट एन ईजी जॉब, यू नो। लोग इतना नहीं कर पाते हैं कमिट, बट आपकी रुचि है तो आपने कमिट किया है, और अपन देखेंगे कि आप पूरे 5 साल जुड़े रहें। बीच में कुछ चैलेंजेस आएंगे, सबके साथ आते हैं, क्योंकि वो कर्मों की उदीर्णा होती है ना। जो कर्म 10 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद आने वाले थे, वो कर्म उदीर्णा होकर अभी आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? क्योंकि अभी आपने ये जुड़ान किया है, न परमागम ऑनर्स कोर्स से जुड़ान नहीं किया है, आपने मोक्ष मार्ग से जुड़ान किया है। और जब हम मोक्ष मार्ग से जुड़ान करते हैं तो जो अनादि का मोह है, वो अनादि का मोह छटपटाता है, क्योंकि अनादि से वो अपने को कंट्रोल कर रहा है ना। वी आर बीइंग कंट्रोल्ड बाय दिस डिल्यूजन फ्रॉम टाइम इमोर्टल। और जो अपना अनादि से कोई अपने को कंट्रोल कर रहा है और अपने उससे सामने बगावत करे, अपन उसके सामने फाइट करें, तो वो ऑब्वियसली है कि वो भी थोड़ा एग्रेसिव हो जाएगा। और वो एग्रेसिव हो जाएगा तो वो क्या करेगा कि ऐसे ऐसे कुछ चैलेंजेस आपके जीवन में लाएगा। वो चैलेंजेस ऐसे लाएगा कि जिससे आप स्वाध्याय से कट ऑफ हो जाओ। अगर आप स्वाध्याय से कट ऑफ होते हो तो ही इज रिलैक्स्ड, बिकॉज उसको पता है कि जब आप स्वाध्याय से कट ऑफ होते हो तो उसका पकड़ हावी होता है, और जब आप स्वाध्याय से कनेक्ट होते हो तो उसका पकड़ ढीला होता है। और उसके बाद आप जो निर्णय लेते हो, और निर्णय से वो और ढीला होता है, यू नो। सो इट इज ए विन विन सिचुएशन फॉर अस। हम लीड करेंगे, भले अनादि से उन्होंने हमें कंट्रोल कर रखा है, बट आज हम ये प्रण लेते हैं, है ना, ये हम नक्की करते हैं आज से कि अब हम इस मोह को हरा के ही छोड़ेंगे। मोह की सेना को जीतने का मैंने उपाय प्राप्त कर लिया है। पंडित आचार्य अमृत चंद्र देव प्रवचन सार की टीका में ये स्टेटमेंट देते हैं। गाथा नंबर है 79 प्रवचन सार जी में, आप पढ़ना टीका आचार्य अमृत चंद्र देव की। लास्ट लाइन उसने लिखी है कि मैंने मोह की सेना को जीतने का उपाय प्राप्त कर लिया है। एंड यू नो, वो खुद मोटिवेट करते हैं कि अब ये मोह की सेना को मैं जीत लूंगा। सो हम लोग को हमारी अभी जो आगे के 5 साल जो चलेंगे हमारे, हम आचार्यों से कनेक्ट होकर चलेंगे। हम आचार्यों के अभिप्राय को समझने की कोशिश करेंगे। एंड व्हेन यू गेट इनटू द माइंड ऑफ आचार्य, आपकी जो लेवल है, पुरुषार्थ का लेवल भी बढ़ जाता है, आपकी निर्णय की ताकत भी बढ़ जाती है, एंड आप रियली आचार्य क्या कहना चाहते हैं उस और आप गहराई में जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप तत्व की गहराई में जाते हो, और फिर आपको चीजें बहुत स्पष्ट हो जाती है, आपका ज्ञान बहुत निर्मल होने लगता है। सो ऑल थिंग्स हैपन साइमल्टेनियसली। और ये जो हमने शुरुआत की है वो टोडरमल जी से, अमंगलाचरण से की है, और अभी हम जो 10 पॉइंट पढ़ने चाह रहे हैं कि हमें शास्त्र अभ्यास क्यों करना चाहिए, बिकॉज अनलेस एंड अनटिल वी नो द ऑब्जेक्टिव, वो सीरियसनेस हमें नहीं आ पाती है। हमें क्या बेनिफिट मिलता है? वी आर ऑल बनिया। सो बनिया का नजर हमेशा दृष्टि प्रॉफिट पर रहती है, यू नो। सो जब तक आपको ये नहीं बताया जाए कि आपको क्या लाभ मिलेगा, आपको इंटरेस्ट तो है ये करने का, इसलिए आप जुड़े हो, बट अगेन दैट मोह अंकल विल अटैक यू। और मोह अंकल आपको अटैक करेंगे तो हो सकता है कि आप कट ऑफ हो जाओ स्वाध्याय से। इसलिए अपन पहले ही समझ लेते हैं स्वाध्याय की महिमा, है ना, शास्त्र अभ्यास की महिमा पंडित टोडरमल जी के शब्द में। मैं आपको सीक्रेट बता दूं कि ये जो आचार्य के शब्द हैं, या फिर कोई विद्वान है पंडित टोडरमल जी जैसे ज्ञानी विद्वान, यू नो,
ये शब्दों में भी इतना मैजिक होता है कि वो जो अर्थ है वो अपने आप हमें समझ में आते हैं, और ये जो हमारी रुचि है, ये रुचि को बहुत पुष्ट करते हैं। ये शब्द मैजिक शब्द है, ये कोई ऑर्डिनरी शब्द नहीं है, ये मैजिक शब्द है। ये शब्द पढ़ने पर ही हमें उसका अर्थ भाषण होने लगता है, और बहुत गजब का एक एटमॉस्फेयर और एक इकोसिस्टम हमारे ही ज्ञान में डेवलप होता है। यू नो, वी आर गोइंग टू सेटल ईच एंड एवरी प्रिंसिपल दैट वी स्टडी इन दिस जिनवाणी, and that is going to get settled in our knowledge. हमारे ज्ञान में वे सब अच्छी तरह खचित हो जाएंगे, और जब वो अच्छी तरह खचित हो जाएंगे तो उसका लाभ हमें ये मिलेगा कि जब हमारे डे टू डे लाइफ में कोई भी प्रसंग बनेगा ऐसा कि जब हम उसमें समाधान नहीं निकाल पा रहे हैं, तब हमें ये हमारा अप टू डेट ज्ञान, अपडेटेड ज्ञान ही हमें मदद करेगा सारे समाधान। हमारे पास कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है इस दुनिया में जिसका समाधान जिनवाणी में ना हो। तो जिनवाणी पढ़कर हम पूरे जितने भी मोक्ष मार्ग में हमें प्रॉब्लम्स आएंगे, हर्डल्स आएंगे, चैलेंजेस आएंगे, वो सब हमें ये जिनवाणी बता रही है। ठीक है, तो आप एकदम निर्भर हो जाइए, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा जो हम समाधान न कर पाए। ठीक है, तो हमें जिनवाणी हमेशा समाधान देती है, और कुछ और ज्यादा चैलेंजिंग हो जाए जिसको आप हैंडल नहीं कर सको तो आप जरूर हमसे पर्सनली पूछ सकते हैं। एनी टाइम, यू आर ऑलवेज वेलकम, और हम आपको उसी सिचुएशन में आपको समाधान जिनवाणी से ही बताएंगे। हम अपने और से नहीं बताएंगे, हम आपको जिनवाणी से ही बताएंगे, और उसका रेफरेंस भी हम दे देंगे। तो आप थोड़ा तो समझ ही जाओगे हमारे साथ। थोड़ा आप पढ़ के, बारंबार पढ़ के उस चीज को एकदम बराबर अपने ज्ञान में बिठा करके आप स्वयं समर्थ हो जाओगे उस चैलेंज को जीतने में। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे, हम निर्णय करेंगे, और हम मोह को जीतेंगे। ठीक है, हम पढ़ेंगे, हम निर्णय करेंगे, और हम मोह को जीतेंगे। We will study, and we will understand, and we will arrive at a decision, and we will win over delusion. So this is what in short I have made the bhumika, and now we will read. I have shared in the group, so you can have access to this page from the group itself. Apurva ji has not been able to share the screen space on that script, but anyway everyone can get access from the group. देखो शास्त्र अभ्यास की महिमा, जिसके होने पर मीन्स ये शास्त्र अभ्यास के होने पर जीव परंपरा से आत्मानुभव दशा को प्राप्त होता है। परंपरा से मतलब इन दैट फ्लो इटसेल्फ। ओके, सो ये आप कनेक्ट हो गए ये फ्लो से, और ये फ्लो में ही आगे बढ़ते बढ़ते अनुभव दशा आएगी, गारंटी से आएगी। ठीक है, अनुभव दशा को प्राप्त होता है। सो हमारा प्रयास कैसा रहेगा पता है कि हम लोग बुद्धिपूर्वक एफर्ट्स तो करेंगे, लेकिन कार्य फिर ऑटोमेटिक होता है। ये जो बैलेंस है वो हम आपको जरूर समझाएंगे। एक बार आपके नॉलेज में ये बैलेंस बन गया है ना, चाहे वो निश्चय व्यवहार का बैलेंस हो, चाहे वो चारों अनुयोग का बैलेंस हो, है ना, चाहे वो ज्ञान और वैराग्य का बैलेंस हो, ये बैलेंस बन गया मतलब आपका हैप्पीनेस स्टार्ट, आपकी वितरागता स्टार्ट हो जाएगी। सो हम इसको बराबर करने वाले हैं। अब जरा भी चिंता मत करना, इसको हम बहुत अच्छी तरह करेंगे। बस मेरा एक ही कंडीशन रहेगा, आपको क्लास लाइव अटेंड करना है, और बाकी सब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
और कोई चीज आपको ना समझ में आए तो एनी टाइम यू कैन आस्क मी पर्सनली ऑन माय पर्सनल चैट, ओके। और क्लास में भी प्रश्न आ गया उस समय, तो उस समय भी आप पूछ सकते हैं, और क्लास होने के बाद भी पूछ सकते हैं, क्योंकि कुछ चीजें होती है कि उस समय आपको शायद नई बात आ जाए, बट वो ग्रेजुअली आ जाती है। ऐसी कोई बात नहीं होती है कि जो हम अनअटेंडेड छोड़ देते हैं, इसलिए आपको सारी चीजें पता ही चल जाएगी। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, लेकिन आपको ऐसा लगे कि नहीं ये हमें समझना जरूरी है, तो आप पूछ भी सकते हो। You can raise your hand, you can directly ask me, I don't mind, even if you don't raise your hand and you can ask in between also, I don't mind. जैसे आपको ठीक लगे वैसे आप कर सकते हैं। तो देखो शास्त्र अभ्यास की महिमा, टोडरमल जी हमें कह रहे हैं कि देखो 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 मीन्स जानो शास्त्र अभ्यास की महिमा, जिसके होने पर जीव परंपरा से आत्मानुभव दशा को प्राप्त होता है, जिससे मोक्ष रूप फल प्राप्त होता है। तो क्या होगा? आत्मानुभव दशा इज द फर्स्ट पड़ाव एंड द अल्टीमेट पड़ाव इज मोक्ष दशा। इन बिटवीन देयर विल बी मोक्ष मार्ग। और मोक्ष मार्ग क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, तीनों की एकता, यूनिटी ऑफ थ्री इज पाथ ऑफ लिबरेशन या मोक्ष मार्ग। ठीक है, तो आपको फल भी बता दिया और कैसे शुरुआत होगी, अनुभव दशा से शुरुआत होगी। और उसके पहले कैसे शुरुआत होगी? उसके पहले ये शास्त्र अभ्यास से शुरुआत होगी, जो आपने ऑलरेडी कर दी है व्हेन यू हैव रजिस्टर्ड ऑन आवर साइट। ओके, आपका रजिस्ट्रेशन आ गया, आपने साइन कर दिया। नाउ यू विल रन थ्रू दिस कोर्स फॉर 5 years, और 5 साल में आपका इतना कॉन्फिडेंस ग्रो होगा कि आपको लगेगा कि सम्यक दर्शन एंड मोक्ष इज ए बाई प्रोडक्ट। ओके, सो जिसके होने पर जीव परंपरा से आत्मानुभव दशा को प्राप्त होता है, जिससे मोक्ष रूप फल प्राप्त होता है। यह तो दूर ही रहो, है ना, दिस इज तो परंपरा। इमीडिएट क्या होगा? शास्त्र अभ्यास से तत्काल ही इतने गुण प्रकट होते हैं, इंस्टेंट, है ना। लोग कहते हैं कि बाद में होंगे प्रोमिसेस, दे मेक प्रोमिसेस, बट आवर जिनवाणी डज नॉट मेक प्रोमिसेस, इट गिव्स यू इंस्टेंट बेनिफिट। ओके, तो ये 10 पॉइंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बट मैं इसे अभी पेंडिंग रखता हूँ। आपको होमवर्क है, आप पढ़ के आना। नेक्स्ट क्लास में आप यहीं से शुरुआत करेंगे। उसके बाद हम आपको मंगलाचरण का अर्थ भी बताएंगे। जो आज हमने मंगलाचरण किया वो भी पंडित टोडरमल जी का है, ये भी पंडित टोडरमल जी का है। और इसके बाद हम बाल बोध का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीक। अभी स्वानुभूति जी ज्वाइन हो गए हैं और हम उनका लाभ लेंगे, बिकॉज वी रेयरली गेट चांस टू हैव स्वानुभूति जी ऑन बोर्ड. So it is a privilege for all of us and for us also to have this mentor of this course. In fact, I would say I am very grateful to Swanubhuti ji, because this has changed my life. This Parmagam Honors course teaching, this has changed my life, and I am always grateful. She keeps on giving me opportunities time and again, and I cannot express my gratefulness in words. But I carry this feeling in my heart, and very few things come out in terms of words, but I have great respect and reverence for Swanubhuti ji. And over to you, Swanubhuti ji. Thank you so much. Thank you, Rajesh bhai. Sabhi ko Jai Jinendra. Rajesh bhai is very kind. I'm sure you all already know him very, very, very well. He is one of the most popular teachers. 2016 onwards, ऐसा कोई साल नहीं बीता है जब राजेश भाई ने बैचेस नहीं लिए हैं. And you have already, attended his class also. A few of you who have not already, experienced his lectures
earlier or not heard about him. So you are in great hands. Let me tell you that Rajesh bhai is a totally samarpit I will not call him a lecturer, because while he takes the lectures, he just shares everything from his heart, जो उनको लगता है, जिसमें वो बिलीव करते हैं, वो चाहते हैं कि मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे. So once again, thank you Rajesh bhai for agreeing to take these lectures and these classes, and I think the feelings are all mutual. Okay, अब ये जो कुछ वक्त आज हम बिताएंगे साथ में, सबसे पहले आप सभी का इस परिवार में स्वागत है. वेलकम टू द फैमिली कॉल्ड परमागम ऑनर्स, एंड यू विल वेरी सून रियलाइज, बहुत ही जल्दी, कि आपका जिस परिवार को आप परिवार कहते हैं, यदि वो ऑलरेडी इस कोर्स में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो अगले 4-5 सालों में आपका ये परमागम ऑनर्स परिवार, आप ये रियलाइज करेंगे कि आपको ज्यादा अच्छी तरीके से समझता है और आप इनको समझते हैं, और आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स का सलूशन यहाँ आपको ज्यादा इजीली मिल जाता है. क्योंकि ऐसा फर्क हमने देखा है कि लोग who think alike, people who believe in the same concept of life, philosophy of life, relate better. अब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें इसलिए भी क्योंकि ये कोर्स तो आपके हफ्ते के बस 2 घंटे लेने वाला है, नहीं? दैट्स इट. ये 2 घंटे, क्या ये सिर्फ 2 घंटे है? एक बार विचार करिएगा. I am sure you're aware of the Pareto principle, 80-20 rule. 80% of our time goes into the value which is only getting created for 20% of the benefits that you're deriving in your life, and vice versa. तो यदि मैं 80-20 रूल के हिसाब से बात करूं, तो जो ये 2 घंटे हैं आपके जीवन में, वास्तव में देखा जाए तो आप हफ्ते में 2 ही घंटे जीते हो. कब? जब आप स्वाध्याय करते हो. हमारी पूरी लाइफ टाइम यदि हम देख लें, जो साल निकल गए वो तो निकल गए, पर हम उन्हीं पलों में जीते हैं. किसके लिए? क्योंकि यहाँ पे एक पार्टनरशिप चल रही है, एक शरीर की और एक आत्मा की. तो जो ब्रश किया वो तो 12 आवर्स से ज्यादा लास्ट नहीं करने वाला है, और जो नहा लिया वो 24 आवर्स से ज्यादा लास्ट नहीं करने वाले हैं. जो खाना खा लिया वो भी आपके 8 घंटे से ज्यादा लास्ट नहीं करने वाले हैं. लेकिन ये 2 घंटों में जो आप वैल्यू ऐड कर रहे हैं, जो कमाई कर रहे हैं, वो कमाई हमारे स्वयं के लिए हो रही है, हमारे अनंत काल के भविष्य के लिए हो रही है. एंड दैट इज व्हाट इज द मोस्ट क्रिटिकल फॉर अस. आप 24 आवर्स तो पैसे भी नहीं कमाते हो, isn't it? You earn in the few hours, and then you start doing the other things apart from that. कहीं ऐसा नहीं हो कि हमारे जीवन के 24 घंटे और 70-80 साल इस जीवन की ही कमाई में निकल जाएं और पता चले कि हमने खुद के लिए तो कोई वक्त दिया ही नहीं. दूसरी बात कि while this is very true कि हम जैन सिद्धांतों को समझेंगे, पर एक बार के लिए आप भूल जाएं कि ये कोई जैन सिद्धांत है, यानी कि कोई धार्मिक सिद्धांत है. क्योंकि वी आर बोर्न जैन, क्योंकि हम जैनिज्म में बिलीव करते हैं, इसलिए हम इन सिद्धांत को मान रहे हैं. इस चीज को अभी दिमाग से बाहर कर दीजिए. ये समझिए कि ये जो सिद्धांत है ये यूनिवर्सल सिद्धांत है. ये यूनिवर्सल सिद्धांत है, यानी कि जीव मात्र को, मेरी सिर्फ इस पर्याय में ही नहीं, हमेशा मुझे, हर जीव को ये रेलिवेंट होने वाले हैं. क्योंकि जिस वक्त हम इस तरीके से सोचना शुरू करेंगे तो वो चीजें हम एक्सेप्ट करते चले जाएंगे, और जब हम इन्हें एक्सेप्ट करेंगे तो ही इनका लाइफ में हमें फायदा मिलना स्टार्ट होगा. एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि ये जो हम सीख रहे हैं और समझ रहे हैं, ये बहुत सीरियस बिजनेस है. मैं इसलिए भी कह रही हूं
क्योंकि कई बार हम आते हैं और यदि थोड़ा सा एंटरटेनमेंट कम होता है, थोड़ा सा रेपिटेशन हो जाता है, थोड़ा बहुत भी हमें लगता है कि अरे ये वाला टॉपिक तो मुझे आता है, तो हमें लगने लगता है कि ये तो मुझे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, मैंने तो स्वाध्याय किया हुआ है, आई ऑलरेडी नो 4 कषाय, आज तो 4 कषाय पढ़ाने वाले हैं। क्योंकि आपने जिस दृष्टि से इन विषयों को अभी तक समझा था, अब वो दृष्टि बदलने वाली है। और वो दृष्टि अगर बदलनी है तो दृष्टि बदलने में आपको सेम टॉपिक नहीं देखना है, उस टॉपिक को जिस तरीके से आज तक मैंने नहीं देखा वो तरीके से उस टॉपिक को देखना शुरू करना है। क्योंकि लेट मी टेल यू, जैन दर्शन बहुत कॉमन सेंसिकल है एंड इट इज ऑल ऑब्वियस। आप 4 कषायों के नाम पढ़ने के बाद समझेंगे अरे ये कॉन्सेप्ट तो मैं समझती थी कि गुस्से में आनंद नहीं है, गुस्से में आकुलता है, गुस्से में राग है। लेकिन जिस दृष्टि से पढ़ाया जा रहा है वो दृष्टि बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड बिलीव यू मी, हमारी दृष्टि ही आज तक नहीं बदली है, इसीलिए हम संसार में हैं। ये ज्ञान हमें हो चुका था पहले भी, बहुत सारे विषयों का, बहुत सारी बातों का, लेकिन इस दृष्टि से नहीं हुआ था, इसीलिए हमारी दृष्टि मिथ्या रही, आज तक सम्यक नहीं हो पाई है। इन 5 सालों में यदि हमारी दृष्टि बदलने लग जाएगी तो समझना हमारा जीवन बदल गया है। और दृष्टि बदलना कोई एक छोटा सा सब्जेक्ट नहीं है, कोई बहुत सिंपल सी बात नहीं है, ये वो बात है जो अनादिकाल से बड़े बड़े जीव भी नहीं कर पाए हैं और इसीलिए संसार में रुल रहे हैं। यू डोंट नीड टू बी वेरी इंटेलिजेंट, लेकिन दृष्टि बदलना बहुत जरूरी है। तो इसलिए हमारा IQ कोशेंट, EQ कोशेंट कम है, ज्यादा है, डज नॉट मेक अ डिफरेंस। 8 साल के बच्चे की ये दृष्टि बदल सकती है, एक तिर्यंश गति के जीव की ये दृष्टि बदल सकती है, एक मेढक की दृष्टि बदल जाए तो उसकी सृष्टि बदल सकती है। और हमने इतनी दुनिया में इतना सब कुछ कर लिया लेकिन दृष्टि नहीं बदली तो हमारा काम वहीं का वहीं अटका रह जाएगा। इसलिए ये 2 घंटे हम अपने लिए दे रहे हैं, ये 2 घंटे हम कुछ बात सिर्फ समझने के लिए नहीं दे रहे हैं, अपना देखने का नजरिया बदलने के लिए दे रहे हैं। ये देखने का नजरिया बदलना ये सबसे महान कार्य है, क्योंकि यही सम्यक दर्शन का कार्य है, यही मोक्ष मार्ग का कार्य है। तो इस 2 घंटे को हम अपने मोस्ट प्रोडक्टिव 2 घंटे माने, इसको सिंसियरली, क्योंकि आप 20 घंटे दे नहीं सकते हैं, लेकिन वो दृष्टि बाकी के 18 घंटे तक और कंटिन्यू कर सकती है। स्वाध्याय नहीं 24 घंटे हो सकता है, लेकिन देखने का नजरिया जो 2 घंटे में बदलेगा वो बाकी के 22 घंटे में आपके सपने में भी आपकी दुनिया को देखने के नजरिए को बदल देना चाहिए। इससे ही आपका सक्सेस क्राइटेरिया डिसाइड होगा, ना कि कितना रटा और कितना याद रखा और कितने मार्क्स आए और कितने आपने आंसर्स बढ़िया दिए, क्योंकि हमें स्वयं को जवाब देना है अंत में, किसी और को नहीं। तो आप सबकी अभी तक तो इंटेंशन, इच्छा, रुचि पॉजिटिव है और ये इस बात का प्रतीक है कि आप इस कोर्स को ज्वाइन किए हैं और यहाँ आए हैं। लेकिन आज आपको एक वादा करना होगा अपने आप से, किसी और के लिए नहीं, खुद के भविष्य के लिए, कि बहुत बार ऐसे मौके आएंगे। क्यों? क्योंकि 5 साल का कोर्स है ना, जीवन तो अभी बहुत है आगे साथ में बिताने का। बहुत सारे ऐसे मौके आएंगे जहां पे हमारी विषय जोर मारेगी, विषय जोर मारेंगे यानी कि 5 इंद्रियां जोर मारेंगी, कोई इच्छाएं जोर मारेंगी। कभी मन होगा कि मैं हॉलिडे करूं, मैं फैमिली के साथ पार्टी करके आऊं, मैं थोड़ा और टाइम यहाँ स्पेंड करूं, वहां स्पेंड करूं, क्योंकि विषयों में अनादिकाल से उलझते आए हैं, वापस 5 साल में उलझ जाए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन ऐसा कोई भी इंद्रिय विषय इतना बड़ा नहीं हो सकता कि जो आपको आपकी राह से डगमगा दे। इसे हम कहेंगे डिस्ट्रैक्शन। और ये डिस्ट्रैक्शंस ही हैं जिसके कारण आज तक मैंने जब भी सही राह पे चलना शुरू किया, मैं फिर भटक गया, मैं फिर भटक गया, मैं फिर भटक गया। तो बहुत सारे विषयों के मौके आएंगे और बहुत सारे कषायों के मौके आएंगे। मैं ये इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि while we try to be as professional as we can, but end of the day everybody is a human being. सबकी कमजोरियां हैं।
हो सकता है कहीं आपका ईगो सेटिस्फाई नहीं हो पाया हो सकता है कोई ने आपसे कहीं सही तरीके से बात ना की हो सकता है कोई बात जो सिखाई जाए वो आपकी श्रद्धा से कॉन्फ्लिक्ट करती हो और आपको बुरा लगे ये बात सुन के कि ये मेरे बारे में ऐसा कहते हैं, मैं ऐसा करूंगा तो मैं यहाँ जाऊंगा, मैं वहां जाऊंगा, मेरा ये होगा, मेरा वो होगा। लेकिन किसी भी कषाय में चढ़ के गलती से, चाहे वो क्रोध हो, चाहे वो मान हो और चाहे वो लोभ हो, यदि आपने इस राह को जिस पे चलना शुरू किया है, यहां से अगर आप डगमगा गए तो नुकसान किसका होगा? नुकसान किसका होगा? मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी हैं, किसी को प्रमोशन मिल जाता है, किसी की शादी हो जाती है, किसी का बच्चा हो जाता है, किसी का कोई बात का बुरा लग जाता है और वो कोर्स छोड़ देता है बीच में। तो कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होगी, आपको अप्स एंड डाउन्स फेस करने पड़ेंगे। पहली बार अगर किसी लड़के का लड़की से, हस्बैंड का वाइफ से झगड़ा हो जाता है तो वो डिवोर्स नहीं दे देता है। He tries to work for the marriage, isn't it? Or she tries to work. तो यहाँ पर भी आपके साथ अप्स एंड डाउन्स आएंगे। कभी कोई असाइनमेंट बहुत डिफिकल्ट लगेगा, कभी एग्जाम में कम मार्क्स आ जाएंगे और आपको लगेगा हाउ कैन आई फेस द सेम सेट ऑफ पीपल वंस अगेन विद दिस काइंड ऑफ मार्क्स। कोई को लगेगा एग्जाम नहीं देता हूँ, कोई को लगता है असाइनमेंट नहीं देता हूँ, लेकिन ये वो घड़ियां हैं जब आपकी परीक्षा असली हो रही है। द रियल एग्जाम, the real परीक्षा की घड़ी is when the distractions will show up and you will still have to stand by for yourself and for nobody else. तो इसलिए हम अपने आप के साथ ये प्रण लें, ये डिसाइड करें, ये ठान लें। हो सकता है कोई किसी के कहने पे आ गया हो, कोई हो सकता है कि एक समय की अपनी भावनाओं में सोचकर कि इस बार तो ज्वाइन करके देखते हैं इसलिए आ गया और हो सकता है कोई ट्रायल कर रहा हो। यूएस में तो बहुत ज्यादा आदत है ना लोगों को फ्री लुक पीरियड की, 15 डेज में रिटर्न कर देंगे, 30 डेज में रिटर्न कर देंगे। ये कोर्स रिटर्न करने के लिए मत करना, क्योंकि हम अपने मोक्ष मार्ग से रिटर्न हो जाएंगे तो हम किसको जवाब देंगे? ये मनुष्य भव से आके वापस एक इंद्रिय में रिटर्न हो जाएंगे तो हम किसको और जवाब देंगे? किसी और को जवाब नहीं देना है, यहाँ पे हम स्वयं के जवाबदार हैं। तो हम ये प्रण लें कि हमने इस बात की शुरुआत करी है, अपनी ओर कुछ सिंसियर एक कदम बढ़ाया है और ये 2 घंटे मेरे वो 20% ऑफ माई लाइफ होंगे जो मेरी 80% ऑफ द फ्यूचर को डिटरमाइन करने वाले हैं। कुछ और छोटी मोटी बातें कि एग्जाम्स और असाइनमेंट्स सुनने में तो ऐसा लगता है कि व्हाई आर दे एक्सपेक्टिंग ऑल दिस फ्रॉम अस? हाँ, आप स्वाध्याय करवा दो, हम स्वाध्याय कर लेंगे, बस। इससे ज्यादा हमें और क्या आवश्यकता है? आपने देखा होगा कि यदि एक कोई राजा का बेटा होता है तो 5 साल की उम्र से ही उसको हाथ में तलवार दे दी जाती है कि उस राजा के बच्चे को हु हैज ऑल द रिचेस इन द वर्ल्ड, उसको अभी से लड़ाई करना क्यों सिखाया जा रहा है? उसकी परीक्षा क्यों ली जाती है हर दिन कि तू मार के दिखा, एक समय के लिए भी तेरी अगर दृष्टि हटेगी, नजर हटेगी तो वो तलवार तेरी गर्दन पे आके रख दी जाएगी, भले लकड़ी की तलवार क्यों ना हो। लेकिन उसको लड़ना इसलिए सिखाया जाता है क्योंकि जिस दिन दुश्मन हमला करेगा उस दिन वो एडवांस नोटिस देकर नहीं आएगा कि यू हैव 3 years टू प्रिपेयर योरसेल्फ। नहीं, वो तो बस आ जाएगा and he has to be ready all the time, and the earlier he prepares himself the higher chances that he will live, क्योंकि राजाओं के बेटे की जान सबसे ज्यादा खतरों में होती है। 6, 7, 8 साल के बच्चों को भी मार डाला जाता है क्योंकि बहुत दावेदार हैं उस सीट के। तो हमारे साथ भी यदि हम देखें, मोक्ष मार्ग की सीट्स बहुत लिमिटेड है, कोई आपको मारने तो नहीं आएगा, लेकिन एक बात पक्की है कि ये जो मौका मिला है ना हमें, ये बहुत फाइनाइट मोमेंट्स, फाइनाइट ईयर्स, किसी के साल हैं, किसी के महीने हैं, किसी के दिन हैं, किसी के घंटे हैं, लेकिन बहुत फाइनाइट टाइम मिला है प्रिपेयर होने के लिए, वो काम करने के लिए कि जब भी हमारी ये पर्याय पलटे, जब भी दुश्मन हमला करे, हमें प्रिपेयर होने के बहुत लिमिटेड टाइम में ये इंश्योर कर लेना है कि हम अपनी जान को बचा सकें। मोक्ष मार्ग पे
हमारा टिकट कंफर्म हो सके, उसकी प्रिपरेशन करनी है। तो जो एग्जाम वो राजा के बेटे को गुरुजी करवाते हैं एक लकड़ी की तलवार लेके, वो कितना क्रिटिकल और इम्पोर्टेंट होता है। उस एग्जाम में पास होगा तो जीवन के एग्जाम में पास हो पाएगा, और उस एग्जाम में फेल हो जाएगा, उससे कन्नी काटेगा, तो जो असली युद्ध भूमि में होगा सबसे पहले गर्दन उसकी कटेगी। ये जो हम एग्जाम्स कराते हैं, ये एग्जाम्स प्रिपरेशन है, और एग्जाम्स में जितने कम मार्क्स आए उतनी बड़ी गुड न्यूज है आपके लिए, ये खुशखबरी है। क्यों? क्योंकि जिसके पूरे एग्जाम में मार्क्स आ जाएंगे, अब वो व्यक्ति तो बुक खोल के पढ़ेगा ही नहीं, उसे तो सब आता है नहीं। लेकिन यदि आपके मार्क्स कटे हैं तो इसका मतलब है हमारी समझ में कमी रह गई थी, और हमें पता चलेगा कि यहाँ कमी रह गई थी, तो आप फिर पुस्तक खोलोगे, आप फिर स्वाध्याय करोगे। जो स्वाध्याय करेगा, जो अपनी गलतियों को सुधारेगा, वो जीतेगा, वो आगे बढ़ेगा। जो अपने आप को सब जाना हुआ मान के बैठ जाएगा, वो तो अब आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो ये एग्जाम और असाइनमेंट्स, ये हमारी गलतियां निकालने का काम करते हैं। लोग तो बोलते हैं हम तो स्वाध्याय कर लेते हैं खुद ही, हमें टीचर की क्या आवश्यकता है। कि आपकी गलती कौन निकालेगा? तुम जो गलत समझ लोगे, तुम तो बस वो गलत समझ के समझोगे यही सही है, और मिथ्यात्व में ही आगे बढ़ते चले जाओगे। तो अध्यापक जरूरी है, क्योंकि जिस अपेक्षा वो बात बताएगा, वो अपेक्षा आपने नहीं देखी थी। असाइनमेंट्स जरूरी है, क्योंकि असाइनमेंट्स के माध्यम से, उसके बहाने आपका फिर स्वाध्याय होता है गहराई से। उसके माध्यम से आप प्रैक्टिकल लाइफ सिनेरियोज में अप्लाई करते हो जबरदस्ती असाइनमेंट करने के लिए हर सिद्धांत को, और फिर वो आपकी आदत बन जाता है। एग्जाम्स जरूरी है, क्यों? क्योंकि हम एग्जाम्स में वैसे ही क्वेश्चंस पूछते हैं जहां हमें पता है कि एक्सीडेंट प्रोन जोन्स है, जहां पे लोग गलती करेंगे समझने में, फिर अटक जाएंगे, फिर फंस जाएंगे, इतना समझाने के बाद भी गलत समझेंगे, और वो बहाना होता है जहां क्लास में और स्टूडेंट्स में फिर डिस्कशन होता है कि अरे ये बात का आंसर ये था, यानी कि मैंने गलत समझा। ओपन बुक है भाई, एग्जाम ओपन बुक है। आपके रटने की सामर्थ्य की परीक्षा नहीं ली जा रही है, आपने कितनी गहराई से समझा है इसकी परीक्षा ली जा रही है। असाइनमेंट्स है, आप कैसे अप्लाई करते हो, कैसे अपने दिमाग में उस पूरे विषय को इकट्ठा करते हो, कैसे कॉम्प्रिहेंसिवली उसको समझते हो, इस चीज को टेस्ट किया जा रहा है। सो द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ द कोर्स, ये सिर्फ ये इंश्योर कर रहा है कि आप कम से कम 5 बार गहराई से स्वाध्याय करो, और हर बार आपकी गलती निकले, और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में आप एक कदम आगे बढ़ो। एंड स्टिल आई एम श्योर कि देयर विल बी रूम फॉर इम्प्रूवमेंट इन द कोर्स। तो मेरी आखिरी बात जो मैं ये कहना चाहती हूँ वो ये है कि ये कोर्स इज रन बाय द स्टूडेंट्स, फॉर द स्टूडेंट्स, एंड इट इज ऑफ द स्टूडेंट्स। वी डोंट हैव अ सिंगल पेड एम्प्लॉय। सारे वॉलंटियर्स, सारे मैनेजमेंट कमिटी के लोग और सारे टीचर्स, सबकी एक ही भावना है कि हमें एक ट्रेजर मिला है, हम उस ट्रेजर को शेयर करें। हमारे सारे सेंट्रल मैनेजमेंट कमिटी के मेंबर्स आपकी तरह स्टूडेंट्स हैं, जिनने ये रियलाइज किया कि वी ऑल्सो वॉन्ट टू गिव बैक, एंड वी वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रचार। तो वो आते हैं और वो हमसे कहते हैं वी विल मैनेज दिस टास्क, वी विल डू दिस फॉर यू। और वो जॉब करते हुए लोग हैं, बिजनेस करते हुए लोग हैं, बाल बच्चे वाले लोग हैं, उनमें से कुछ तो पढ़ रहे हैं, और साथ में सेंट्रल मैनेजमेंट कमिटी में भी आ गए। तो ये ऐसा कोर्स है, वी हैव ट्राइड अ लेवल बेस्ट, वी आर इनटू कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। यदि आपको लगता है फिर भी कोई शिकायतें होती हैं, चाहे मैनेजमेंट से हो, चाहे कंटेंट से हो, तो यू आर अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली, and you have to at least help in making us better from all the perspectives. तो यदि आपका एक्सपोजर है कोई अच्छे स्टाइल्स में, तरीकों में, आपको लगता है we can be better in some fashion, तो give us constructive feedback, give it to the right people. Don't spread negativity, don't share it with the other students, share it with the right people who can make a difference to it. And we assure you कि यदि we see value in incorporating those suggestions, we will try to be better. तो आप सब कंस्ट्रक्टिवली अगर कोई चीजों में फ्लॉज देखते हैं, या मैनेजमेंट में या कंटेंट में, तो फील फ्री टू गेट बैक टू द मैनेजमेंट टीम, एंड वी आर हियर
so that we can reach out to maximum people. एक और आखिरी बात कि यदि आप में से कुछ लोगों के परिवार ने ज्वाइन नहीं किया है अभी तक, तो हमारे पास बहुत रिक्वेस्ट आती है 4 महीने बाद, 6 महीने बाद और साल भर बाद कि आई वांट माय फैमिली मेंबर्स टू जॉइन द सेम बैच, बट देन वो पीछे रह गए, दे कैन नो लॉन्गर जॉइन द सेम बैच, नहीं तो उनकी वो फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होगी। तो यदि आप लोगों में से किसी को अभी ऐसा लगता है कि विद अ लिटिल बिट ऑफ इंस्पिरेशन, लिटिल बिट ऑफ नजिंग, आप अपने इमीडिएट फैमिली मेंबर्स एंड एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स को इन बैचेस में ज्वाइन करा सकते हैं, go in the journey together, because you will see a different value, a totally different value coming out of it. हमारे यहाँ फैमिली बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं जहाँ पे लोग स्पेशल 40-50 लोगों का बैच अपने सिर्फ परिवार, फैमिली और फ्रेंड्स का रखते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं अब हम पार्टी करते हैं तो भी हमारा बात करने का तरीका, डिस्कशंस, ऑब्जेक्टिव, सब कुछ बदल जाता है। तो वी वुड वेरी वेरी स्ट्रांगली रेकमेंड कि अपना इकोसिस्टम भी हम ऐसा ही बनाएं जिसे हम सत्संग कहते हैं, कि अगर हमारे परिवार वाले ही हमारे सत्संगी हो जाएंगे तो हमारा भविष्य, यदि हम कभी थोड़े चलायमान भी हो गए, हम भटक गए, तो भी वो हमारा स्थितिकरण कर देंगे। हम बच्चों को संस्कार देते हैं, 10 साल बाद हमारे बच्चे ही हमें सिखाने लग जाते हैं कि मम्मा आप तो गलत कर रहे हो, और हमें तब इतनी खुशी होती है कि जरूर हमने सही वक्त पे उनको सही बात सिखाई, ताकि आज जब हम डगमगा गए तो वो ही आ गए हमें सुधारने के लिए। तो इस तरीके से हम अपना इकोसिस्टम भी राइट करें जितना हो सकता है। इसके साथ मैं अपनी बात पूरी करना चाहूंगी। अपूर्व दोषी को आप जानते होंगे, उन्होंने काफी कोऑर्डिनेशन किया है। दीप्ति पाटिल को आप जानते होंगे, उन्होंने काफी कोऑर्डिनेशन किया है आपके साथ, या आप करेंगे उनके साथ में। ये हमारे सेंट्रल मैनेजमेंट कमेटी के वो लोग हैं जो टोटली समर्पित हैं, and they are students themselves, and we would like to thank them from all our heart, because यदि ये volunteers की टीम इतनी समर्पित नहीं होती तो ये इतना बड़ा काम कोई एक आदमी कर नहीं सकता है, reaching out to so many people with more than 75 batches and 5,000 plus students and ever increasing numbers. So once again we will try to, I'm not taking all the names. हमारे सेंट्रल मैनेजमेंट टीचर्स कमिटी में राजेश भाई हैं, और भी दूसरे टीचर्स हैं, विवेक जी हैं, भावना बहन हैं, डॉक्टर शुद्धात्मा प्रभा टडैया हैं। सो वी वुड लाइक टू थैंक ऑल द central management committee members, you know, and we would want you also to understand and constructively keep coming back to us for wherever we can, you know, make the best value out of this. यदि आपको कोई प्रश्न पूछना है तो आप पूछ सकते हैं in the last couple of minutes. I'm sure although that Rajesh bhai has not left anything you know pending, and जब भी तात्विक प्रश्न होंगे तो he is always available for you. Okay, I know a few of you anyways very well, so thank you so much. Yes, sure. So I know you mentioned that we have to give 2 hours, which is of course just the class, and I am pretty sure that 2 hours is not enough to really understand and go through this journey. So be practical and help me understand how much real time, like actually not going overboard, but just to make sure that at least we understand the content that we are going to go over in this semester. How much of effort are we looking at in a week? Sure. So I will answer these questions in phases. If I only give 2 hours a week, will I be able to go through the 5 years? Yes. If sincerely you are doing the 2 hours the way you're supposed to do, and some extra time of assignments, which are only 3 assignments over the period of 6 months, assuming 2 hours each for every assignment, also another 6 hours. So it's not a lot on the hours. Do I recommend only 2 hours a week? No, of course no. Because when you are in love, you might talk to your beloved only for maybe an hour in the day, but you know, वो व्यक्ति आपके दिमाग में 24 घंटे छाया रहता है. The moment you get any time out, you want to go back and talk or chat or think about. तो ये वो टॉपिक है जो मेरे जीवन के हर घड़ी हर पल रेलिवेंट है. तो कॉन्शियसली हो सकता है कि आप शास्त्र लेके दिन में हफ्ते में 2 घंटे बैठ रहे हैं.
आप रोज स्वाध्याय का नियम लें, आधा घंटे का, 1 घंटे का, विच इज आइडियल, क्योंकि ये सब्जेक्ट सिर्फ समझने का नहीं है, ये अभ्यास का सब्जेक्ट है, उस चीज को इम्प्लीमेंट करने का सब्जेक्ट है। इम्प्लीमेंटेशन आप ऑफिस में है तो हो सकता है, आपका आर्ग्यूमेंट हो गया है घर में तो हो सकता है। जब भी आपकी कषाय जोर मारे, वहीं पे आप बोलो कि नहीं, ओके, लेट मी ओपन माय बुक, लेट मी गो बैक टू द सेम कॉन्सेप्ट दैट आई हैव बीन अंडरस्टैंडिंग। इट विल बी अ पेन किलर। ये एसओएस बेसिस पे काम आ सकता है। हाँ, जिस वक्त दिमाग खराब है, यू आर फीलिंग लो, यू आर डिप्रेस्ड, उस पल में काम आ सकता है। सो टू ईच इट विल बी डिफरेंट। हमारे ऐसे भी विद्यार्थी हैं जो दिन में 4-4 घंटा स्वाध्याय करते हैं, और ऐसे भी विद्यार्थी हैं जो 2 घंटे की क्लास के अलावा में भी 10-15 मिनट रोज थोड़ा सा एक रिफ्रेश कर लेते हैं। बोथ विल वर्क। किसका मोक्ष कितने करने पे होगा, ये जरूरी नहीं है कि नंबर ऑफ आवर्स डिफाइन करें, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि ये सब्जेक्ट एट द बैक ऑफ योर माइंड शुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट वे इन विच यू लुक एट योर लाइफ। तो ऐसा अपने आप हो जाएगा कि रुचि की तीव्रता में आपका मन होगा कि जब भी मुझे जितना भी वक्त मिले मैं करूं। आइडियल अगर आप एक सिनेरियो की बात कर रहे हैं तो हमें डेली स्वाध्याय करना ही चाहिए। इसलिए करना चाहिए क्योंकि जैसे 24 घंटे में एक बार नहा लेते हैं तो 24 घंटे तक वो सफाई चलती है, काइंड ऑफ। अगेन, कोई जल्दी गंदा हो सकता है, कोई लेट, तो तुम 2 बार नहा लो। तो हम स्वाध्याय यदि एक बार सुबह उठ के सबसे पहले कर लेते हैं तो हमारा दिन एक अलग तरीके से बीतता है। भले कोई 1 घंटा करे, कोई आधा घंटा करे, कोई 15 मिनट करे, लेकिन रोज ये विषय मेरे दिमाग पे एक बार रिवाइज हो जाना चाहिए। और जिसके वो रिवाइज होता चला जाएगा तो ग्रेजुअली वो देखेगा कि बहुत डिफरेंस पड़ रहा है। एक रिसेंटली एक कोट पढ़ा था, somebody said कि रोज आप जब घर से निकलते हो ना, तो दरवाजा बंद करने से पहले एक बार डांस करके घर से बाहर निकलो, तो आप देखना द वे यू स्पेंड योर डे विल बी वेरी डिफरेंट। तो सिमिलरली वो तो विषयी कषाई जीव हैं, और उन्होंने तो एक डांस करने के लिए बोला कि एक छोटा सा डांस करके बाहर निकलोगे तो आपका एटीट्यूड बदल जाएगा, द वे यू स्पेंड योर डे। तो सिमिलरली यदि आप सुबह सुबह उठकर स्वाध्याय करके घर से बाहर निकलेंगे और अपना दिन शुरू करेंगे, तो आप सोचो कि हमारा दिन कैसा बीतेगा। तन की शांति, मन की शांति। तो ऐसा ही हम कोई भी कषाय जोर मार रही हो और वो एक प्रक्षाल हो जाएगा हमारा कि अरे मैं कहाँ ये लालच में फंसा हुआ हूँ, मैं कहाँ ये क्रोध में आ रहा हूँ, मैं कहाँ कंप्लेंट्स कर रहा हूँ। तो आइडियल सिनेरियो में वी विल रेकमेंड कि आप डेली स्वाध्याय करें। सुबह उठने के बाद एक बार करें, वो जो दवाई देते हैं ना डॉक्टर्स मुकेश भाई, और एक सोने से पहले करें, क्योंकि द फर्स्ट 12 आवर्स उठने के बाद डिफाइन करेगा, और सोने से पहले जो हम पढ़कर सोते हैं पूरी रात भर वही दिमाग में, सपने में, सबकॉन्शियस में घूमता रहता है। तो दैट विल बी आवर आइडियल प्रिस्क्रिप्शन। थैंक यू। ओके, थैंक यू स्वानुभूति जी, बहुत अच्छी प्रेरणा दी आपने। और ये जो एक बड़ी बात उन्होंने बताई बहुत ही अच्छी लगी मेरे को, कि पूरा फैमिली का माहौल चेंज हो जाता है। अगर पूरी फैमिली जुड़ती है तो घर का पूरा माहौल चेंज हो जाता है। और ये अगर माहौल कंड्यूसिव हो गया तो मतलब आपका भी पुरुषार्थ का जो लेवल है वो भी बढ़ जाएगा, एंड थिंग्स विल बिकम इजी फॉर यू। सो ये बहुत अच्छी बात बताई कि पूरे परिवार को जुड़े, और ऐसे कुछ लोग तो जुड़े ही हैं, कपल्स जुड़े हैं कुछ, तो वो तो अच्छी बात है। बट आई वुड लाइक कि कोई चीज अपन अपने को अच्छी लग रही, अपन कर रहे हैं, तो अपने जिस पर अपना राग है इमीडिएट, है ना, अपने जो फैमिली मेंबर्स है वो लोग भी जोड़े तो वो उनके लिए भी अच्छा है। तो इस तरह से हम जितने को भी जोड़ सके, क्योंकि ये अभी शुरुआत हो रही है, तो अभी जुड़ जाएंगे, और साथ साथ में आप लोग कर भी लोगे, 2-4 क्वेश्चंस भी डिस्कस हो जाएंगे घर पे, तो ये ना आपको हर तरह से हेल्प करेगा। ठीक है। और हमारे पास जूनियर परमागम ऑनर्स कोर्स भी हमारा चलता है, तो जिनके बच्चे हो उनको वहां जोड़ दें। तो इस तरह से मतलब ये तो हमने आज पहली बार सोचा है, ये बात स्वानुभूति जी ने बताई तो, लेकिन ये बहुत ही अच्छा आइडिया है।
और हर कोई को प्रैक्टिस करना चाहिए। दूसरी बात कि हमें 2 वॉलंटियर्स की आवश्यकता है। तो मैंने बताया है कि वॉलंटियर्स बनने से क्या क्या फायदे हैं, अभी ग्रुप में शेयर किया है। तो जिनको भी इंटरेस्ट है वॉलंटियर बनने में, वे हमें मुझे मतलब पर्सनल चैट पे अपना नाम एक पर्सनल चैट पे कर दीजिए, आई एम इंटरेस्टेड। तो फिर मैं उसमें से चयन करके नेक्स्ट वीक में हम उसके पहले ही अनाउंस कर देंगे कि हु विल बी द वॉलंटियर्स। थोड़े टेक्निकल सेवी होने चाहिए, क्योंकि इसमें थोड़ी टेक्निकल चीजें करनी होती है। वो सारा कुछ आपने आप देख लेंगे, लिखा है हमने। तो वो वॉलंटियर की हमें बहुत आवश्यकता है। एक बात ये, और एक मैं और शेयर करने वाला हूँ ट्रांसलेशन की एक लिंक। जो मीटिंग आज हमारी है, जिसको ट्रांसलेशन करने में भी इंटरेस्टेड है वो भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ये सब ऑप्शनल चीजें हैं, आपको जैसी सहजता रहे वैसा आप करें। ठीक है, अपन हर समय टाइम पे ही क्लास शुरू करेंगे और टाइम पे ही एंड करेंगे। आज थोड़ी 5 मिनट लेट हो गए अपन, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन आगे से हम आपको टाइम पे ही छोड़ेंगे। जय जिनेन्द्र। नीच निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना 7 बार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना 7 बार है। 9 बार नौकान मंत्र गिनेंगे। सभी को जय जिनेन्द्र। नेक्स्ट वीक मिलेंगे आप। जय जय जिनेन्द्र जिनेन्द्र। सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।